कृपया अपना माइक ऑफ रखिएगा। आप सभी लोग जो भी जुड़ते हैं, थोड़ी सी इस मर्यादा का हम सभी ध्यान रखें। तो मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सूर्य की गति के बदलने के साथ हम विषयों को भी कभी-कभी बदल लेते हैं, और वो विषय जो हैं वो कभी हम आर्ट से लेकर के, कलाओं से लेकर के, साहित्य से लेकर के, विज्ञान और विज्ञान से होते हुए कभी-कभी मैनेजमेंट और कॉमर्स की ओर भी अग्रसर होते हैं। तो समय के साथ परिवर्तन एक आवश्यकता भी है और करना अपेक्षित भी है, रुचि के लिए भी और क्रिएटिविटी के लिए भी। तो आज का जो विषय है उसकी ओर मैं आप लोगों को सीधे-सीधे इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपसे परिचित कराता हूँ, और बहुत संक्षेप में, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने इस सारे विषय को जो मैं आपके साथ अगले 2-4 मिनट में साझा करने जा रहा हूँ, उससे आप लोगों को परिचित मैंने करवा ही दिया था। तो लेकिन फिर भी उसको थोड़ा-सा जानने और समझने के लिए, ताकि हमें पृष्ठभूमि स्पष्ट रहे, इसका कॉन्टेक्स्ट हमें ध्यान रहे, और दूसरी बात कि हम कितना जानते हैं और उससे आगे जानने के लिए आज हमने आदरणीय विद्वान वक्ता डॉक्टर बी.वी. के शास्त्री जी को सादर आमंत्रित किया है। वो हमारा आगे का मार्ग निर्देशन करेंगे। तो जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि जब हम इस तरह का विषय लेते हैं तो उसके पीछे 2 बातें हैं समझने वाली, कि संगणकीय संस्कृत में प्रोग्रामिंग को लेकर के हम कैसे शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं, इस बात के ऊपर हम फ़ोकस करेंगे, और ये भाग पहला है, पार्ट 1 है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये विषय जो है वो कि न केवल संस्कृत के लिए बल्कि लिंग्विस्ट्स के लिए भी, जो लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट से हैं, फिलॉसफी डिपार्टमेंट से हैं, उन लोगों के लिए भी ये बड़ा उपयोगी है, और कंप्यूटर वालों के लिए तो है ही है। यहाँ पर हम ये 2 बातें देखें कि कंप्यूटर फॉर संस्कृत और संस्कृत फॉर कंप्यूटर, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। हमारा अभी तक जो ज़्यादा फ़ोकस रहा है, केंद्र रहा है, वो है कंप्यूटर फॉर संस्कृत जो है, उसको हम कैसे उपयोग में लाएँ, उसके लिए हमने क्या-क्या किया, इस सब चीज़ों के ऊपर मैंने आपसे पिछली बार बात की थी, कि कॉलेजेस में हमने क्या किया है, कैसे वर्कशॉप्स लगाई हैं, और किस तरह से हम लोगों ने बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश की है। लेकिन वो केवल यहाँ तक ही सीमित रहा कि हमने कंप्यूटर को संस्कृत के लिए उपयोग किया, जैसा कि मैं अगले 1 आध मिनट में आपसे वो सारे विषय परिचित कराऊँगा। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम अग्रसर करना चाहते हैं, और बाकी शेष संस्कृतज्ञ भी जिसमें रुचि ले रहे हैं, वो है संस्कृत फॉर कंप्यूटर्स, कि संस्कृत को हम कैसे उपयोग में लाएँ कंप्यूटर के, और प्रोग्रामिंग में उसको किस तरह से हम लागू करें, उस पे भी मैं 1 आध मिनट में आपसे बात करूँगा, और फिर डॉक्टर साहब जो है हमारा मार्ग निर्देशन करेंगे। तो जब हम संस्कृत फॉर कंप्यूटर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम 4 विषयों पे रुकते हैं। एक है पाणिनि के संगणकीय विचार जो हैं, कंप्यूटेशनल, उनके आइडियाज़ क्या हैं पाणिनि के। मीमांसा में जो अर्थशास्त्र विश्लेषण की प्रक्रिया है, उसको कैसे उपयोग में लाएँ। न्याय और नव्य न्याय विशेष रूप से उसको कैसे हम प्रयोग में ला सकते हैं, ताकि एम्बिग्यूइटीज़ की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एम्बिग्यूइटी भी अभी हम एक चर्चा में लाएँगे, इस विषय को लाएँगे, क्योंकि वो एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और फिर साहित्य शास्त्र में जिस तरह से अर्थ निर्धारण और भाषा के शोधन का एक प्रक्रिया है, उसको कैसे हम उपयोग में लाएँ, ये मुख्य रूप से 4 शास्त्र हैं, जिनको हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में उनका हम उपयोग करें। कंप्यूटर फॉर संस्कृत जो है, वो आप सभी जानते ही हैं, और जिन लोगों ने कंप्यूटेशनल संस्कृत अपने कॉलेजेस में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, वो सभी जानते ही हैं कि हम किस तरह से उसका उपयोग करते रहे हैं, कि इनपुट-आउटपुट टूल्स के रूप में, स्टोरेज के रूप में, एसेस और प्रिजर्वेशन ऑफ संस्कृत कॉर्पस आदि-आदि, ये सारी बातें आप लोगों को मैं पिछली बार स्पष्ट कर चुका हूँ, और ये मैं आप लोगों के साथ जो है इनके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दूँगा। और ये सब चीज़ें हम जानना चाहते थे कि किस तरह से संस्कृत को हम उपयोग में लाएँ, ये सब बातें मैंने आपको बता रखी हैं, कि संस्कृतज्ञों के लिए बहुत सारे नए आयाम जो हैं वो हमारे सामने उपस्थित हैं, अगर हम कंप्यूटर और संस्कृत को एक साथ जोड़ते हैं और उनको आपस में एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। और
अंतिम उद्देश्य जो हमारा है वो केवल इतना ही है कि संस्कृत शास्त्रों को सम्मानजनक उपयोगितापूर्ण स्थान कैसे हम उभरती हुई टेक्नोलॉजी में प्रदान करें, उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है और अपेक्षित संसाधन हमारे पास क्या उपलब्ध हैं। इस सारे विषय को हमें जानना और समझना होगा। इसी के लिए आज डॉक्टर साहब का हमने उनको आमंत्रित किया है और वो हमारा मार्गनिर्देशन करेंगे। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट पैराडाइम्स हैं और लैंग्वेज बैरियर्स भी इस सारे विषय में बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे-धीरे धैर्यपूर्वक हम इन सब विषयों को समझेंगे और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे की बातें करूँ, मैं डॉक्टर साहब से जब मैंने इस विषय पे निवेदन किया था, तो उन्होंने जो मुझे एक रिप्लाई किया, वो मुझे बड़ा प्रभावी लगा और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे उनके इस 4 पंक्तियों से ही उनका परिचय आपसे करवाऊँ। तो जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हमें बताएँ इस सारे विषय के बारे में, तो ही सेड, आई विल इंट्रोड्यूस द संस्कृत कीबोर्ड। यहाँ से वो शुरुआत करेंगे और आगे-आगे जितने हमारे लेक्चर्स चलेंगे, उनमें वो धीरे-धीरे अग्रसर होते जाएँगे। So he said, I will introduce the Sanskrit keyboard depending upon the time and interest. The focus in this presentation is to anchor Paniniya Shiva Sutra Varna Akshar Samamnai as voice primary base to build Panini computer. The message is answering a question. ये बहुत रुचिकर है, उसको आप देखें। If today's digital technology, hardware and internet were available to Panini or Patanjali, how would they have approached the design of Sanskritam for machines? कितना सुंदर और सटीक प्रश्न है। यही विद्वानों की विद्वत्ता है कि वो आपके लिए प्रश्नों को भी प्रस्तुत कर देते हैं। नहीं तो हम तो प्रश्नों के नाम पर इधर-उधर तलवारें चलाते रहते हैं, लेकिन प्रश्नों को भी संस्कारित करके देना, ये गुरु का दायित्व होता है। तो मुझे इस बात की बड़ी आनंद हुआ कि उन्होंने कितने सहज रूप में ये हमारे लिए प्रश्न को भी परिभाषित कर दिया। उत्तर तो देंगे ही देंगे। केवल इतना ही नहीं, आप आगे के प्रश्नों को भी देखें और बड़ा रुचिकर लगेगा। वुड दे स्टिल सीक रिसोर्सेज़ recourse to English, Latin, Greek, Roman, European alphabets to build a Sanskrit programming language as other side of Deva Bhasha. Would this be a model of Mantra Bhasha or for intelligent devices, spoken language systems, robotics, flying machines, etc.? What would be Yantrartham Sanskritam Bhasha? And furthermore, he says, what we have now is Videsh Bhasha based language technology on which Indic language computing technology is built. बड़ी स्पष्ट बात है. What needs to be done for native natural Brahmi Indic Sanskrit language technology for non-English models of Indian language computing? How will Shastra Paribhasha will help in this exploration? आप देखिए कि मैं जितना बोल रहा हूँ, उस सब को बताने की, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब ने सारे के सारे मेरे इतने लंबे-चौड़े भाषण को, वक्तव्य को उन्होंने कितने संक्षेप और सटीक और उपयोगी रूप से रख दिया है। तो ऐसे आज के मुख्य वक्ता से आपका मैं फिर एक बार परिचय कराने का आनंद लेना चाहता हूँ, सुख लेना चाहता हूँ। डॉक्टर बी.वी. के वेंकट कृष्ण शास्त्री जी एक प्रसिद्ध नाम है, प्रतिष्ठित नाम है और उनकी जो उपलब्धियां हैं और जो शास्त्र ज्ञान है, दोनों से मैं आपका बहुत संक्षेप में परिचय कराना चाहता हूं। वो फाउंडर हैं योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी एट फ्लोरिडा, यूएस, और उसके साथ-साथ लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने यूएस पेटेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ संस्कृत फॉर कंप्यूटर्स वो उसको हासिल किया हुआ है एंड हैज सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ वैदिक यूनिकोड प्रपोजल फॉर यूनिकोड स्टैंडर्ड कंसोर्शियम and promoter of many innovative projects in applied Sanskritam. और यही तो हम सबकी अपेक्षा है, यही एनईपी की, एनईपी 2020 की, आईकेएस की, यही तो अपेक्षा है और ऐसे ही व्यक्तियों का हमें मार्ग निर्देशन अपेक्षित है। और वो इस अप्लाइड संस्कृतम के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, श्रुति क्रांति एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, वॉइस प्राइमरी मल्टीलिंगुअल वेब लैंग्वेज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी
और इसके साथ-साथ वो लैंग्वेज टीचिंग पेडागोगी के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम है। और उन्होंने और खुद वो बहुत सारे संस्कृत ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स जो हैं, जो कि मूल रूप से वैदिक ट्रेडिशन जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिस है, उसमें वो सिद्धहस्त हैं। उनको वो परंपरागत रूप से प्राप्त है और उसमें वो सिद्ध भी हैं। और इसके साथ-साथ आप ये देखें कि उनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपसे साझी की है। लेकिन मैं उन सब में विशेष ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन उनकी उपलब्धियों से परिचित होना बहुत आवश्यक है। वो इसलिए ताकि वो हमारा मार्ग निर्देशन करते रहें, हमारी दिशा को ठीक करते रहें। तो वस्तुतः डॉक्टर बीवी शास्त्री इज़ द करंट मास्टर ऑफ वाग योग मेथड ऑफ लर्निंग संस्कृतम. He has contributed to several student publication texts, journal reviews, articles, and has served in various professional as business executive, leading projects as a teacher and as a professor. He was the pioneer in 1995 to produce the first traditional content-rich interactive multimedia encyclopedia titled Srimad Bhagavad Gita, Gods of India, for international markets, facilitating digital learning of Bhagavad Gita. And he has served for 12 years as a resident professor of Sanskrit and Hinduism for an American university and taught so many students all over the world. And moreover, Dr. Shastri is a language technologist who has served as a member of Vedic Unicode proposal for Unicode Standard Consortium. And he's promoting the use of Paninian Sanskritam as language model with the voice primary features for developing an architecture to deliver the vision web for all in all users languages, voices and scripts. तो इस तरह से अगर आप उनकी उपलब्धियों को देखने लगें, ये तो बहुत संक्षेप में मैंने आपसे उनका परिचय कराया है। इसके अतिरिक्त और उनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन 1-2 बातें आपसे मैं साझी करके मैं डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब और मैं जितने हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, आपसे केवल इतना ही साझा करना चाहता हूँ कि हम लोग कॉलेज लेवल पर हम लोगों ने जो वर्कशॉप्स कंडक्ट की, खुद सीखा और मैं ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले, लगभग 25 वर्ष पूर्व, मैंने डॉक्टर गिरीशनाथ झा के पास जेएनयू में जाकर के उनसे जो है ये कंप्यूटेशनल संस्कृत जो है, वो सीखा। 10 दिन लगभग उनके पास रहा और उनकी जो लैब थी, लैंग्वेज लैब, उसको मैंने भरपूर उसको उपयोग में लिया। तो मैं कि उनसे ज्ञान ग्रहण करने को मैं स्वीकृति प्रदान करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। और इस वक़्त वो डायरेक्टर हैं कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कमीशन के। तो हम लोग इतना जानते हैं कि अन्विता विधान और अभितान्वय ये 2 शब्द हैं जिसके आधार पर कम से कम मेरी इच्छा ज़रूर है कि इसके बीच में हम कंप्यूटर को समझने का प्रयास करें। अन्विता विधान से मतलब क्या है कि जो स्पीकर है वो जिस तरह से कोड करके अपनी बात को प्रस्तुत करता है, वो अन्विता विधान है। हालाँकि मीमांसा का ये टेक्निकल शब्द है, ये और अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन सामान्य रूप से मुझे लगा कि ये हमें जानना उपयोगी होगा। दूसरी ओर अभितान्वय का मतलब है कि जो डिकोड करने का प्रोसेस है, कि जो श्रोता के रूप में हम सुनते हैं या पाठक के रूप में हम पढ़ते हैं, उसको जो कोड होकर आया उसको कैसे डिकोड करना है और कैसे उसके अर्थों को जानना है। और उसमें व्याकरण, साहित्य और मीमांसा ये हमें काफ़ी सहायता करते हैं। ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। और केवल इतना ही नहीं है, उसमें ये भी बातें हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी कोडिंग में डाली है, कितने, कहाँ पर और कैसे डाली है। ये सारी बातें जो हैं, इस सारे शास्त्रों में हमें देखने को मिलती हैं कि इन्फॉर्मेशन कोडिंग कितनी की है, व्याकरण के अनुसार सूत्र जिसे आप कहते हैं कि हाउ मच, वेयर एंड हाउ। और केवल इतना ही नहीं, उसमें ब्रेविटी भी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो संस्कृत शास्त्रों से हमें सीखने वाली बात है। तो ये जानने के साथ-साथ जो क्लासरूम में हम लोगों ने मिलके करवाया, जिसके लिए मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर नीरज शर्मा जी का, जो कि कन्या महाविद्यालय जालंधर में हैं और साथ-साथ प्रोफ़ेसर डॉक्टर विनय सिंघल जी, जो आरकेएसटी कॉलेज कैथल में हैं। इन लोगों ने अपना भरपूर प्रयास किया है कंप्यूटेशनल संस्कृत को अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करने का
और बहुत गहन प्रयास किए हैं, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। तो हम सब ने मिलकर के ये प्रयास किया कि हम इस रूप में, आप सभी देख सकते हैं, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इस रूप में हम कंप्यूटेशनल संस्कृत जो है स्टूडेंट्स को सिखाएं और उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दें। स्टूडेंट जब आए तो प्रैक्टिकल के रूप में हम उसको कोई राम शब्द दे दें और वो एक्सेल में जाकर के इन सब चीजों को करके दिखाए। ये हमारा प्रयास था। इसी तरह शिव और बहुत सारे हैं, ये केवल आपको कण मात्र से बता रहा हूं कि ये प्रयास हम लोग करते रहे। इसके अलावा हमने जो दूसरा पक्ष इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है वो पार्सिंग और टैगिंग की, ताकि स्टूडेंट को हम इस योग्य बना दें कि कल को वो जाकर के किसी भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड होकर के इस पार्सिंग और टैगिंग को करना सीख ले। अब जो हमारे सामने प्रश्न हैं, उन प्रश्नों, सारे प्रश्नों को मैं नहीं दोहराने जा रहा, लेकिन मैं केवल एक दो स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो हम अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनको कन्वर्ट कर दें संस्कृत में। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अधिकतम संख्या जो है अंग्रेजी का जो प्रयोग होते हैं वो केवल 100 के करीब होते हैं। तो इफ बट वाई इन सब शब्दों को अगर आप संस्कृत के इस शब्दावली से बदल भी देंगे तो वो कोई बहुत लाभकारी नहीं होने जा रहा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ना अंग्रेजी को समझेगा ना वो संस्कृत को समझेगा, वो तो 0-1 की भाषा समझता है। मोटे तौर पे समझ लीजिए कि भी वो केवल 0 और 0-1 की भाषा को ही में ही कोडिंग लेगा, और अगर आप संस्कृत में प्रयोग भी करेंगे तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0-1 में। तो उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों का कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं होने वाली। हमें आगे जो प्रोग्रामिंग करनी है, जो हमें एल्गोरिदम्स डेवलप करने हैं या हमें और चीजें करने वाली हैं, उस पे मेरा ज्यादा फोकस है। तो मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा समय उनको देना चाहता हूँ। तो एल्गोरिदम्स को हम कैसे डिजाइन करें, कैसे हम इंट्रोड्यूस करें अपनी क्लासेस में एनईपी के अंतर्गत, ये सारी चीजें मेरी जानने में बड़ी रुचि है। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली बार साझे किए थे, मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूंगा ये सारी स्क्रीन्स, जिसमें हमें फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी पाणिनि की जो है वो क्या, उसके विषय में हमें क्या काम करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में संस्कृत को हम कैसे यूज करें, कैसे उसका उपयोग करें, एल्गोरिदम थिंकिंग जिसके ऊपर मेरा बहुत अधिक फोकस है और इसके ऊपर डॉक्टर पीयूष अग्रवाल ने काफी काम किया, पीएचडी की उन्होंने, और संस्कृत में इसको लागू करने का समाज के संदर्भों में प्रयोग किया, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो एल्गोरिदम थिंकिंग जो है उसको हमें प्रयोग में लाना बहुत आवश्यक है। उसके साथ डाटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन जो है वो हमें सूत्रों से कैसे सीखनी चाहिए, कैसे उनका उपयोग करना चाहिए। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग जो है उसको हम किस तरह से योग को उसमें इंक्लूड करके योग के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। फॉर्मल वेरिफिकेशन थ्योरी जो है वो हमें न्याय, मीमांसा, नव्य न्याय आदि से हमें कैसे लेनी चाहिए। मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन, इन सब चीजों को हमें संस्कृत शास्त्रों से कैसे सीखना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों के एक पैटर्न की हम बात करते हैं कि इस तरह से अगर उनका पैटर्न रहेगा तो इस तरह का वो फल देंगे, तो उसको हम कैसे इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में जो संस्कृत का है वो रोल कैसे हो सकता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग, ये चीज हमें पाणिनि से बहुत आवश्यक रूप से सीखनी चाहिए, जैसे कि वो प्रत्याहार वगैरह बनाना सिखाते हैं। और इसी तरह कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को हम दोबारा से समझने की कोशिश करें संस्कृत के संदर्भों में। तो कुल मिलाकर के ये मेरी ओर से कुछ विषय थे जो मैंने बहुत संक्षेप में कोशिश की है आप लोगों तक एक भूमिका के रूप में रखूं। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर बीवी के शास्त्री जी को कि वो हमें इस सारे विषय में मार्ग निर्देशन करें, हमारे ज्ञान का विस्तार करें और हमें उस बुद्धि के मार्ग पे अग्रसर करें जिससे कि हम संस्कृत को पुनः प्रतिष्ठित कर सकें और उसको हम अप्लाइड, यूटिलिटेरियन और उसको हम रेलेवेंट बना सकें। सर, मंच अब आपका। ओके, कैन आई स्टार्ट? जी जी प्लीज, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं अंग्रेजी में थोड़ा सुविधा से बात कर सकता हूँ
हिंदी मुझे अच्छा समझ में आता है, फिर भी फॉर दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग I feel it is better to go through the English. Okay. First thing, I will go through the presentation. It's about some 25-30 slides first. And then I want Ashutosh ji to come back to this 1 to 10 points, what you raised, application. जैसे हमारा फोकस क्या है, उसमें मेरा प्रेजेंटेशन जो आ रहा है, उससे क्या कर सकते हैं. दूसरा बात यह है, आपने संस्कृत कीबोर्ड के बारे में बताया. यह है हमारा संस्कृत कीबोर्ड. इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. Why is it important? तो बिफोर दैट आपने बहुत सारे माननीय व्यक्तियों का नाम लिया. गिरीश नाथ झा और सारे लोग सब मेरे काम से परिचित है. एटलीस्ट दे नो व्हाट आई एम डूइंग. And earlier to that, there are very respectable, mentionable names. Pandit Ramakrishnamacharyalu, who worked at Tirupati, then Ramanujam, then several others are there. And from IIT Bombay, so many people have worked on this Sanskrit. So I take my respectful pranams to everyone who has worked in this area. I'm not trying to challenge anybody. I'm trying to share my ideas. I may be mistaken, but still, I would like you to think of this. Okay? Then, please listen carefully. Don't lose any questions. Note down all the questions on the chat box. But I will take up the questions only at the end because the flow gets lost. Okay? Then, thank you. अब प्रस्तुत करें. ये प्रस्ताव के लिए मैं गीता की एक सुंदर श्लोक से प्रारंभ करता हूं. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. So this study of Sanskrit for computers is Vangmayam Tapaha. It is Vak Yoga Vijnana. Sanganakiya Sanskritam is human languages defined for Sanskrit. Human languages defined for machines. Okay. So the starting question is, how Sanskrit Shaastras are useful in programming? It's a loaded title. Sanskrit is a language convention. Shastra is a paribhasha. Programming is a digital device technicality, logic, tarka prakriya hai wo. So we have got the element of human machine interface, which is a phenomenon in the last 20 years for AI and all the other related developments with the web. But if we go back in the technology itself, audio machines, recording of voice, playback was one facet of this. Then we go back in the history, mantra. Okay, so weaponizing, energizing a destructive missile using a mantra, we hear in Mahabharata. So many astras were there, shastras were there. A living practice is seen in Navrat when we do the puja of the Ayudha Devatas, Vahana Devatas, everything. It is embedded knowledge, but I am not going in that direction. I am addressing this in a contemporary mode. Today, what we are thinking. AI code, human language, is thought articulation for digital interactive interfaces. ये सूत्र रूप से मैं बता रहा हूं. यंत्रार्थम मानुषी भाषा उपमेधेति कथ्यते. Upamedha is a technical term
for artificial intelligence. Kathyate, that's the definition. Now, this word Upamedha is drawn from my another group, ACCR, Consortium of India, where Gopi and Dr. Subrat Pushti, Dr. Om Vikas, and several others are working. Personalized custom programming of AI devices, computational interface models to cognitive interfaces. This is the paradigm shift that goes. We have got computational interfaces, but we want cognitive interfaces. Applications are totally different. Perspective is totally different. The second one is the known interaction for the last 40 years is with a touch, a finger touch, a keyboard, like a Remington typewriter, or using a pen for writing on a paper, on a medium. But voice interface and going deeper to thought level interface is something that is emerging for various reasons. Therefore, voice primary natural language programming is what we are looking for. It's a paradigm shift. Okay. Then Bhashanuguna Tantragnanam is the second word I use. We have got Bhasha Tantragnan, language technology, but we don't have language appropriate technology. So, language technology to language appropriate technology is the focus. This is where Shastras help. So, keeping these two frameworks in mind, I will address 1 to 10 points what Ashutosh Ji said at the end of the session. But let me go through. Next slide, sir. Okay. So, our goal is to find how classical Sanskrit articulation can be made for the current need. Mantra, yantra, shastra, astra, aushadha, vakyoga, Samskruta Shastra Sutra. Looks complicated. It is nothing complicated. What we are looking for, or what the technologists like Mark, Elon Musk, and other people are looking for is I should be able to think and say, and it should get executed through a device. How the connection is made, how the interface is made, is one of technology. So the modern language for this is mind, brain, natural language interfaces. What we have today is Roman language script character interface, whatever you want to call that as a basic standard. But what we are looking for is non-Roman script programming languages to be programmed with voice, and the very big projects that have taken place in US all around the world are called spoken language systems, humanoid robots, conscious machines, intelligent systems, and in India it has been human or Indic language machine translation solutions. So generic name semantic web, multilingual web, brain chip, these are generic names. Next. So the approach is identify primary terms, frameworks, principles, models, and concepts in Sanskrit Shastra which relate to today's needs, today's expectations. Then build a team concurrence through conversation for collaborative co-working. So the model will be build, own, operate, transfer, boot model for final applications. So if you don't have a business model, it just becomes a big lecture. No, there will be no funding, there will be no takers for that. So boot model is what I propose in front of you. Then where does this figure in current technology models? Promote non-Roman script initiative of SIL. SIL is Summer Institute of Linguistics International. I don't want to get more details into that. Summer Institute of Linguistics is at the core of the Unicode standards promotion and proliferation, and their goal is
Bible in all languages of the world or God's word in all languages of the world. So there is a lot of funding, a lot of interactions with them. So they have provided an interface called Keyman for the Indic languages and all the other world languages. It goes as a part of ISO 639 as the organization standard for the IoT. What is IoT? Okay, I'll leave it there. Okay. Then set new goals. Just previous slide, sir. Just previous slide. Okay. Set new goal. For 40 years, we have been talking of Sanskrit is good for computers, Sanskrit is good for programming language. But today, Panini Sanskritam is to be looked at with a new goal. It is good for natural language AI. So this is the approach we have taken. Next. Now, who is the beneficiary of all these things? Who is your customer persona? For whom are we doing? Bhokta kaha, phalam kim. So the benefit of doing this from India, from Indian Shastra traditions is the beneficiary Bhokta is Bharata Prajaganam, the Indian citizen. Bharata Anushasanam, the governance at India, which needs the multilingual technology. Panini Ganaka Bhasha Atmanirbharata. So we take pride in Sanskrit, making computers work. Is Sanskrit good for computers or current computers are good for Sanskrit? That will be answered in this. Then, Vishwasmin Bharatiya Bhasha Bhashikaha Shikshakaha Samshodhakaha. So how do we teach the Indian languages all over the world where it is not a primary language or an ecosystem language? It is to be studied as a second or tertiary language. Why a German should study Sanskrit through Sanskrit? Sanskritam Samskritanaiva has worked in India for some reasons because there is a connection of Indian languages to Sanskrit. But how would you connect Sanskrit to German, French, Spanish, Latin, Greek, Hebrew? So this is where learning language will be a beneficiary thing. Then Bharatiya Janagana Bhasha Anuguna Sanganak Shikshan Swayattata or Atmanirbharata. So today, language technology throughout India is giving a computer, giving smart devices, at the foundation of which stays English learning as a prerequisite to understand the implementation of NEP, language policy. That's the ground reality. So why people study English? Because that helps them to use the computer, make a living, make a job. But why are we not able to do the same thing, make Indian languages work so beautifully with computers without recourse to English and still generate jobs and economy? Something to be thought of. Rashtre Jana Bhasha Ganak Arthik Vyavahar. This is called the digital economy of the Indian languages. So that needs to grow Vardhanam. Then on the global level, Manushi Bhasha Sanganakiya Swayattata, higher end, where we will be able to use any human language across any human language through an interface design which comes from Sanskrit Shaastras. Okay, next. Next. So the upfront note approach is clarification is I'm not trying to challenge anybody. I respectfully accept and acknowledge I have been a beneficiary of the work done by all the earlier pioneers, peers, interested persons, teams, institutions. So please do not take this approach as confronting. It is a request for collaboration. So the request through this presentation for all peers interested is an open invite for co-working, collaborative, constructive action to pool resources and deliver a goal articulated like Panini Computer. Panini Computer is a goal articulated by Gerard Hewitt, who has been a leading name in computational Sanskrit linguistics or Sanskrit linguistics related. He has done a dictionary work. He's a technologist and he has guided, inspired many institutional people. And he calls Panini as Adi Ganak, first programmer. And then
He openly acknowledges the current English model is incapable of delivering the expected goal. Yet, our institutions, our investments, and our teacher training programs, technical resources still go to build on the English foundation or the Roman character foundation for Sanskrit progress or the Indic language progress. So, this is where the focus comes into picture. Rest of it we will go through. So that upfront note is something like, clarifying myself. I'm not confrontational. I'm open for collaboration. Next. Next, sir. Okay. So the approach strategy steps. Step one is team build, find conversation concurrence. So today, when a traditionalist speaks of Sanskritam, we are talking of Panini Sanskritam. But when the academician, techno-linguist speaks, they are talking of Sanskrit, which is Bhasha part of the Panini, even there a very limited segment, which is a spoken language model. So the totality of the Sanskrit language modeling is not adapted. There is no concurrence on that. There are very, very good reasons for that. Therefore, we need to have this clarity on conversation concurrence. What are we understanding by Sanskritam? What are we understanding by Panini? So the 10 points raised by Ashtoshi, when we want to build the programming, analytics, algorithms. So the algorithms are alaukika prakriya, the sutra. But what is the application is the spoken language interface where the whole work is happening in the mind, not on the processor. So we have not been able to define what is happening in the mind-brain interface as a language to the silicon, the programming hardware. So mind is not silicon, brain is not silicon. Brain is having more carbon than silicon. So when the teams, advanced teams, work on carbon and talk of quantum computing using carbon atom, they're already looking at it. But are we looking at it? That is there in our Shastras. That is there very much present in our Shastras. So Shastra primaries and principles, terms, concepts in the first circle need to be mapped appropriately to the second circle, computer programming and applications. So this is where the whole gray area is sitting. Whole gray area is called language modeling. LML, large language modeling. Have we understood our language, Sanskritam? So, to understand a language, is grammar alone enough? Is Panini alone enough to understand Sanskritam? No, it's not enough. Is Nyaya alone enough to understand the Sutra Karana in Ashtadhyayi or Mimamsa or Vedanta Sutras? No. Then, information analysis, can Mimamsa help without proper foundation of Vyakarana and Nyaya, which is built upon a different character set? So this is where we have to have a clarity on Sanskrit English language technology to Sanskrit appropriate language technology. What we are doing right now is we are building what we project as Sanskrit language related solutions on the foundations of a Java or a Python model, word processors, and we force fit Sanskrit algorithms and outputs, screen generated outputs from the lexicons using office suites, databases, morphological analyzers, AI tools, speech to text, IPA, and all these things. So the deep errors, the fissures, are sitting over in this area.
So this is where a Sanskrit linguist has to talk with a techno-linguist who designs the language model. We are talking to people who apply language. It is like talking, if you want a car, to whom do you talk? If you talk to a salesman, he will sell an existing car. If you talk to a designer, he will say what kind of a car you need to design. So we need to talk to the designers, but where we are talking is the mechanics and the salespersons. This paradigm shift has to take place, and this is what I have understood with my last so many years of working with the Sanskrit groups, asking the basic question: Yantrartham Manushi Bhasha. How do you define Sanskrit for the devices? Next slide, sir. So, gray areas, I explained it. Current thinking: Panini Sanskritam is a language like English. No. The answer is no. Why should we review this? Panini Sanskritam is not a language like English. And if by English, if you mean the UK English or the US English of a certain area spoken in a certain segment of the England or the US, we are mistaken. So this is a fallacy. Sanskritam is not like a language like English. It is not a social language like English for programming. In that sense, even social language English is not required, is not the right thing to program the machines. So how the machines have to be programmed in such a way that they get the Abhita Anvaya or Anvita Abhidhana model of the meaning from the spoken input expression. For that, we require a clarity on the language modeling. For that, we have to go bhasha pada artha, vakya tatparya, related kind of things, where bhasha is a variable. It can apply to each language by its own grammar standards, lexicon standards, character set, logic, paribhasha, and all that. And how? Where does this impact? The impact area is human language, human machine language modeling, processor, input mechanisms like a keyboard, operating system, memory, logic, storage, UI designs for apps in data management. This is a deep technical subject. I will not get into this detail at this stage. Suffice it to say, do we want to go by a single byte, 2 byte, or a 3 byte, or a multi byte character storage system? How that needs to be representing the Samyuktakshar or the Gunitakshar or the Swaritakshar of Sanskrit, accented voice is a deep subject. That is where Sanskrit Shiksha Shastra helps. I will come to that later. So work done by Sanskrit Shastra initiatives, Panini computer roadmap that needs to be drawn. That's a gray area. So what we have done so far is this Sanskrit language keyboard, a primary design interface. Voice interface is yet to be built, but we have the roadmap for that. Then Sankhya is a processor model. Soil is Sanskrit operating system for Indian languages. There are great many people who have worked on this. Upamedha initiatives that has been done right in India way back in 1990s. We have not been able to tap into that. Computational linguistic semantics, morphology, analytical tools, repertory, text lexicons, image database, archives, MT, cross-lingual interfaces. So much so, people are focusing upon OCR. We have worked on that. But it is just giving, okay, this is the sound scripting in a particular language convention to a scripting convention in language B. But where is the content? You still require a human person for that. We have not gone anywhere close to that. Okay, we will review that next. Current thinking. Digital technology is language neutral. This is another biggest fallacy.
that India and many countries have fallen. Digital technology is not language neutral. This is a hype that has been told. Zeros and ones is only for Ganana, computing, counting, enumeration. But language is Varnana, description. So we have a template over which we have to integrate cognitive interfaces, computational inputs, and conversation. That model is Sanskrit. So the current techno models, technology researchers call it as a very futuristic thinking, AI, artificial intelligence, to AGI, artificial general intelligence. The conferences have gone on in the last 5 6 years, and this has been done by Israel and so many other people, and US is also at the back of it. China is trying to catch up on this particular thing. Of course, they want Chinese to come to the mainstream programming languages. That's a different story. So the impact area is interface, processor, and coding. So you go back to the roots of how Varnaksharas become Varnakritis as padas, and then Suptiganta Chayam Vakyam. This is the primary definition of a sentence. And what is a pada? Suptigantam padam. And what is a word in Sanskrit? Without prakriti, pratyaya, prakriya, there is no word. Whereas in English or many other languages, a word is a cluster of characters put together with a beginning and end. Of course, a process inbuilt into that. Have you been able to decode that part in Sanskrit programming? I have my own reservations on that. Next. So the Occam Razor question is Sanskrit language technology related traditional lens. Do we have a Panini language, Shastriya Samskrutam or Sanganakiya Samskrutam, appropriate native natural technology, English like modeling issue? Answer is no. Second question. Sanskrit language technology related language at nation lens. And who should do Sanskrit Sanganakiya? Do you expect US or Germany or France or some other Guatemala to do this work? No. If Sanskrit is of importance to India, India should do that. And this cannot be done on a foreign model. This has to be a native model. So language at nation lens. Do we have a Brahmi Indic language? Bhasha Samskrutam appropriate native natural language technology? Anglicization, code, computation interface, and processing issues? No. I see a lot of questions in the chat, but I will take them at the end. Sanskritam language technology related. Can we contribute to the global lens of AI HMI? Do we have a human nature language? Yoga Bhasha, Vishwa Bhasha, Deva Bhasha, Prakriti Bhasha, Sanskritam, appropriate interface. It is called a cognitive linguistics beyond computational linguistics. The answer is no. So then, how do we go about? This is where we require different Shastras which contribute to the understanding of what is Sanskritam as a Bhasha. Kim tat Sanskritam nama? What is Sanskritam as a language? For this question, the answers are coming as Sanskrit is used in, Sanskrit is applied in, Sanskrit is historical. We are proud of Sanskrit. No, that is not a definition. Sanskritam nama Vagyoga. That is the technical definition from Patanjali, from the Veda. And what is Vak? Vak is thought. Vakya is the output, sentence. Vako Vakyam is the total discipline. Vako Vakyam is the foundation of all the Shastras. Next. So we narrow our focus on science of Sanskrit language. We are focusing right now on application of Sanskrit language, analytics, diagnostics, prognostics of that.
but we get into the science of Sanskrit language. Elements and processes essential and necessary for language code programming to cover computation and communication. Obviously, the single word samvad, sambhashan, bhavakhyan is the essence of this. So they have got different technicalities. The material science part of Sanskrit Shaastras, that is Yantra Padartha Dravya Guna Karma Bhasha, is a different stream of science. It is not the Kavya Bhasha. It is not the Puja Pat Bhasha. This is a technical paribhasha. The challenge question would be like, do Sanskrit Shastras provide a material alternative beyond silicon and carbon for language code programming? My hunch answer is yes. Can we use copper? Can we use silver? Can we use aluminum? Something to be explored, but that's a deviant line. Keep it aside for the time being. Next. So I keep focus on 7 Shastras on a very top level for this presentation. So that is Shiksha, Vyakarana, Chandas, Nirukta, Nyaya, Mimamsa, and Yoga. Okay. So I have put the explanation for each of these things on the slides. When it is shared, you can go through this. So, and the primary focus will be on Varna Akshara Shastra. If we don't anchor the character set coding, the first one, rest of the things are going to be very, very fragile. And this is not my wisdom, this is Panini's wisdom, Patanjali's wisdom, and we repeat that in every puja part, Varanakshara Padabhrashtam. We say that. Okay? And Panini said, if Swaratoparadha, even if an accent is changed, then it will not convey. Dushta Shabdaha is the discourse in Patanjali's Bhashya. Dushta Shabdaha Swarato Varnato Va Mithya Prayukto na Tamarthamaha Yatendra Shatru Swarato Paradhat. So this is the coding technicality of Sanskrit basics. And the Sanskrit basic Varnakshar Samamna is not properly represented in the current digital character standards. And the discourse, when technical people speak of this as Unicode is not enough standard for the Indian languages and for Sanskrit. And are we going to challenge Unicode? Well, that's a bigger question, a global question. India is a signatory for the Unicode Consortium since 1990s, and to review that, you have got a whole lot of process. So, are we a part of W3C or any other programming language? A different question to debate. We will not get into that right now. Okay, next slide. So, the first focus is on Shiksha Shastra, scheme of human voice. Varnaswara, Matra Balam, Samasantana, Ityukta Shikshadhyaya. So it is coming into the Varna Akshara Shastra. Sir, I will answer the question of koshas and other things at the end. Let me go through the slides first. Amara Kosha, Arhalaida Kosha, lexicons. I will touch upon all those things. Science of human voice is Varnakshara Shastra. And where does the Varnaksharas come from? It comes from this voice mechanism here, Kantha. And then where does the thing start? It starts from the mind, Manas. What is the Shiksha Shastra? Atma Buddhya Samayuktaha Manoyumte Vivakshaya Manak Kayagnimahanti Talshaleta Marutam Marutasturasi Charan Mandrojaneti Swara Tatusthana Prayatnabhyam Swara Vyanjanatangataha. So this is the tradition of the voice to the voiced word. What we have as a technology today is a script starting for the technology interface. And that script, for historic reasons, is the Roman alphabet character set in standards. And then
we have mapped it into alphanumeric notation. So in the present alphanumeric system, it has come from the Western side. The Indian side, it should be Varna Sankhya Sanketa Sarini. Varna Sankhya Sanketa Sarini. This can be derived for the entire human range of voice from the 14 Shiva Sutras. How to do that is a detailed course, but it can be done. Work has been done enough on that. So, Varnakshara Samamnaya as Shiva Sutras defines the alpha primaries of Sanskrit language science. Language science has to cover thought articulation cycle. Shokartasya protto me shloko bhotu nanyatha. This is what Valmiki said in Ramayana. In Samvad, a Vakta speaks and Bhokta, Shrota listens. Yes, I will answer that question, sir. Language model sensor, I will answer that. Defines alpha primaries of Sanskrit language science. So what we have in hardware design today is either analog or digital. The digital carries a template, a matrix. In analog, it is seamless. We have not been able to integrate analog and digital smoothly. Analog programming is still a work in progress in many places. How to bring it to the human language and to the level of the Prakrit before Sanskrit or Sanskrit first and Prakrit later is a work to be done. It's a collaborative work. Shiksha covers for Sanskrit cognition, computation, and communication. When we say ityashtadashanam vedah, there is a cognition, there is a computation, and there is a conversational need, an application for that particular thing. Panini Shiva Sutras is one model of Shiksha as Vedanta. There are rest of them. So main feature, voice primary numerics are mapped to Varnas and Varna combinations. Now when we say if you look at the machine, the primary thing is electrical signal variation, and then you have got a coding of that particular thing. So if Panini was able to decipher at least 18 varieties, he did not use a microphone and a speaker or a graph for that. He used the hearing, sense of hearing. So Chakshuhu is visual. Ucharita is akhyata, whatever is voiced. And then the clarification comes from Shrotram, listening. So there is an integration of what one speaks, what one listens. Both have to be equated, identified. There has to be samatva, sahatva, satyatva. Satyatva is truth, sahatva is togetherness, samatva is equivalence. We don't have that in the analog and the digital model. And the digital model hardware that have been used need to be so programmed to align to Shiksha Shastra. Okay, we'll come to that later. That's a very different diversion on that. So the conclusion is corruption of Shiksha elements and processes corrupts Sanskrit Shastra deliverables, which simply means if we build Sanskrit programming on ASCII, which does not truly represent Shiksha listing of the Varna units, we will not be able to achieve Sanskrit computers. Therefore, to achieve Sanskrit computers or Sanskrit computers, we have to get to the Shiksha Shastra basics. So, first point. Next. So, Shiksha Shastra is useful to build unified character code notate table for unique identification of phonemes by language scripting display. So, this is called the voice primary. This is called Kranti, transcendence, elevation from the visual, lipi, scripting to Shruti, listening. This is called the Shruti Kranti. I am grateful for Dr. Om Vikas
who provided me with this term Shruti Kranti, which has inspired me in so many ways. So Shruti Kranti is what is required. You call that as spoken language system. You can interact with voice with a device. Where is it applied? In robotics, voice interactive systems, IVRs. So this integration of voice visual language codes helps in making device interfaces to be natural language appropriate, which people see in the Star Trek, which has been inspiring American research for a pretty long time in a native mode. In contrast to current approach of anglicized phonemes, you take any voice related thing, your base goes to IPA, International Phonetic Association Standards, which builds the IPA, the anglicized phonemes, to the rest of the world languages. And IPA does not comprehensively cover the Shiksha Shastra phonetics, Dhvanimas. So from Lipima to Dhvanima is a technological upgrade that Sanskrit can provide for the computers. Okay. We have called this approach as Varna Sankhya Panini Sanketa Sarini, a Sanskrit native code. I have done some work on that. 16-bit coding template seems good enough to cover this. Maybe 32-bit code required, and that can cover a whole lot of security on that. This code can be easily and seamlessly connected with the existing Unicode. There is no need to kind of drop it. It's an integrated development. Okay, rest of the story is there. Okay, next. So that covers the Shiksha Shastra. Then we come to Vyakarana. Shiksha Vyakarana is primarily founded on the anchor of Shiksha. If Shiksha Shastra is messed up in Sanskrit, Vyakarana of Sanskrit is also messed up. So Vyakarana is Pada Vyutpatti, Vakye Prayoga Shastra, Nana Varna Krutini, Shabda Rupani, Karaka Vibhakti Anvaya Krama Yojana. These are the issues that come over there. You cannot build a Samskrita Padam, Suptigantam Padam, using the Roman alphabet character systems, IPA phonemes, and English language grammar rules. Period. So if we want to build Sanskrit-based programming language, you have got to have the anchor of Shiva Sutra-based Dhvanimas. And that we have not been able to explore as on date. We are working on force-fitting Sanskrit Shiksha, A for A for A for A, K for Ka. This is the model mapping we have taken. We need to come out of this and build a native model. So the primary feature will be voice processing. Output is a voiced sentence. It is not a scripted sentence. Vyakarana rules guide voice unit processing, not script visuals. Language is not painting or dance or music. Bhasha is not Gita, Nritya, Kala. Bhasha is for Bhashanam, Varnana. So if we are looking at Panini feature as voice processing, how are we teaching grammar? Classical model, we want to build Rama, Ramo, Ramaha. Very classical standard example. Okay. How do the grammarian teach that? Rama, that is a given prakriti, akaranta, pullinga, sanna shabda, tadashishyam, sanna pramanatva, lokataha, all that. Then Rama plus Supa, 21 affixes to be given. Now Rama plus S, it is Sthite. Then to make it Rama to Ramaha, whole lot of process is there. So this is the Alaukika Prakriya. This is the coding that is needed. Have you built that coding? Except screen generation of input Rama on left side, show Ramaha on the other side, making in between lexicon driven steps. We have coded the output, but have we coded the process, which is happening in the human brain? That happens only when it is taken as Sanskrit language. But if you take Rama, Prathama Vibhakti,
Ekavachana, Kartari, if it switches the language, in English it still becomes Rama. In Kannada it becomes Ramanu. In Hindi it becomes Ram. How are you going to distinguish this without language ID? And language ID is not ISO 639, starting with EN, two-letter code. So we have not been able to understand Panini's language model, language identification. So if Shiksha Shastra is messed up, Vyakarana is messed up. Why is Shiksha Shastra? Because it starts with voice. Panini Vyakarana starts with voice. We are approaching a voice issue with script, and that too not even the native script, Brahmi script. We are approaching that with the non-Roman, Roman script, Abrahamic script, historical script. So how can you use a spoon where you require a fork or a straw? This is the inconsistency that needs a review. Okay. Then Vyakarana rules guides voice unit processing. Vyakarana has technically defined inputs. Sanskrit Vyakarana is so that it is not input limited. It is a process consistent thing. You give any name in the world, a Chinese name, a Chinese character set, a Japanese character set, a Korean character set, Spanish, it doesn't care for that. Tadashishyam sangna pramanatvat. That sangna is given by the loka. And loka is language of the world. And what the grammarian does is, he processes the sound units to generate a stable, decodable final output, which can go into a random word order structure in a sentence, which is the feature of the C language, but not in many other languages. You require a sequential programming. So Panini has given us a voice coding system where the free word order is acceptable, and that requires the Shiva Sutra, Varnakshara Samanaya, and the whole rules are there. And how many variants he gives? He gives Traiswarya, Udatta, Udatta, Swarita. Then he gives rest of the 18 varieties, the Anunasika, Hasva, Dirgha, Alpa Prana, Mahaprana, everything, which cover the entire human voice range for coding. Where is this accommodated in the existing standards and the templates? So we need to get as a concurrence on Panini model of language for programming. Vyakarana does not set input word meaning. Now people say, when we are coding, what does the word Rama mean? Okay, for the heck of it, take any of the online dictionaries or Monier Williams or Aptay, it doesn't matter what. Look for the word Rama. Do you get one meaning? You get 100 meanings of that particular thing. And for a grammarian, it doesn't matter whether it comes from the root Rama or it comes as two character units Ra and Ma. He says you define the starting and the end of the word. Ra, Ma. Anta is Ma. There the A is the Akaranta. Therefore we say Rama Shabdaha Akarantaha. Then the gender, you define it. If you define Rama Shabda as Strilinga, still the grammar processes that. Is there not Akara the Strilinga Shabda? It is there. You process that. Grammarian is not going to be upset on that. It's your language Nirukta people or the conventional people who get upset on that. Grammarian absolutely doesn't care. It's a template. Akarantaha, Pullingaha, Rama Shabdaha. So if you don't know how to identify the voice beginning of the Shabda, voice ending of the Shabda, semantic boundaries and the semiotic boundaries, how are you going to process? How are you going to make Rama, A or Ra and Ma? The character break has to be Dhvanima. It cannot be script, not RAMA. RAMA is 4 units. Rama is only 2 units.
So this is where Panini we need to understand for the coding purposes. So keeping this in mind, uh, we have done some work on this particular thing. The first thing is to build a Panini Varna Sankhya Sanketa Sarini, that is a inverted table of language, character, and the voice. Visual representation get tagged into the other table. So I call this as universal voice code or a univoice code, which we had a lot of discussion. My mentor, Dr. Om Vikas, calls it as IPA in a different notation. Okay, not the IPA of the existing the English one, but he calls it in a phonetic model. So I call it as universal voice code. So Unicode, you see, to universal voice code is what Panini Shiksha Shastra can help to build the human machine interface by voice. Okay, next. So the starting point has to be build a AI language module by voice interface. And this is a work that needs to be done by Indians, where the Sanskrit scholars and the technologists have to think the language models, the foundation of Sanskrit Shiva Sutra. Shiva Sutra character set used by Panini has to be the basis for the Sanskrit grammar or the human thought articulation grammar. We have called this Shruti Kranti or Upamedha or the Soil Initiative. This is Panini Grammar Anchored Sanskrit AI Initiative. We have seen how Panini transformations can be built to function across multilingual data and facilitate faster, easier ways of machine translation. Just to recollect, my friend Dr. Gopi Bulsu, we worked together to build the small Panini transformations using what he calls as SDML, Sankhya Development Model Markup Language, and we saw the smaller code of SDML generated 40 times faster and more flexible and running on a aging machine like a 486 compared to NVIDIA latest, which was having a higher this one. So we were able to run a Panini transformation on a large data 40 times faster. So that is the power. That was a test. And we have something to show. I mean, I'll have to ask our technical people to speak on this. I'm not so comfortable or competent to talk on this. Panini transformation is something what we have demonstrated. It is available. Next. Now we come to Chandas Shastra. Now, when you take a sentence, how do you differentiate a prose and a poetry? How do you even differentiate a sambhashana from Sangeeta? How do you differentiate a noise from the voice? Because noise and voice produce the same impact on the electrical field, the manifestation of this particular thing. But where is the intelligence to differentiate noise, voice, communication, spoken language, music, Veda, or Shastra? For this, we have to take the guidance from Chandas. It is not enough to take Pingala's Pascal triangle and then the structural this one, Akshara Chandas and Matra Chandas. In voice primary, how do you differentiate a Sraddhara meter from a Mandakranta? How do you differentiate an Anushtup, just a 8 character with all its permutations and combinations, either in Gita 700 shlokas or 1 lakh verses in Mahabharata or 24,000 in Ramayana? Do we have a computational analysis of this? It is very difficult because we don't have a voice defining boundary to say this is where the Lagu Guru shifts take place. This is a work in progress. I don't want to get more details on that particular. It's a work in progress. Next. So Chanda Shastra is useful for text flow analysis on scripting text styles. For Vedic analysis, this is a critical topic. Now, why is this important? Many of you would have been asking,
manuscript decoding. Tons and tons of manuscripts decoding. And in manuscripts, if you see, there is no punctuation, there is no line separator, there is no marker. It is just beautifully etched on a palm leaf manuscript. And you can't even read the depth of it unless it is colored. Okay? So to decode a text that is sitting on the palm leaf, you have to have somebody to read it and then apply the Chanda Shastra for that. This is where Chanda Shastra comes into picture. That is Pingala's analysis. This cannot be done by OCR and then the character segmentation, visual glyph segmentation. There's a lot of other work to be done, language identification. How do you say a T mark kind of a thing, whether it's a Brahmi A or is it a T of a Roman alphabet system or a Korean symbol or a Chinese symbol? Who's defining that? Mind identifies that. The Chakshushrotram takes care of that. But we have not defined that logic because we have not applied our mind as a Lipi Shastra from the tradition. Next. If we are able to go through all these things and a Sanskrit Vakya with padas is given, like Ramaha Pustakam Pathati, 3 words. How much of Sanskrit grammar you require for analyzing this? You require the entire grammar of Panini to analyze just these 3 words as a sentence, and that grammar is enough to decode the entire range of Sanskrit works, whether it is Ramayana or Mahabharata or Gita or Puranas or Kalidasa. So the same amount of grammar is required just to decode 3 words. Ramaha Pustakam Pathati. Why? Ramaha is a Subanta. Pathati is a Tinganta. So unless you know the Sup variations and the Ting variations, and then you have to know the Prayoga, then you have to know the Karaka Vibhakti Anvaya, then you have to know the absence of the Krutadhita Samasas. How on earth are you going to decode this word Ramaha Pustakam Pathati? Simply translate by a lexicon model, Rama is reading a book. So if I give Pathati Pustakam Ramaha, Pustakam Ramaha Pathati, where is the logic? Where is the programming decoding of this particular thing? It's not so simple. We can make a make-believe on the screen, but where is the deep coding and understanding of the language, the brain, the mind process that is going on? This is the Anvita Bidhanavada and Abhita Anvayavada. What Mamata speaks in Kaya Prakasha. So you say some word now, and after 1 hour you say another word. There is no akanksha, there is no sanidhya. So where are we building these things? That is called the white space between the characters, the white space which separates the concept of the virama, the punctuation. Viramo avasanam. Have you understood that particular thing? Is just putting a dot enough for that? No, not enough. Then what is that virama invoice? So this is where the nirukta comes into picture. The very technical thing is, after Vyakarana quotes the Vivakshita Artha into the voice clusters called the Subanta and Tinganta Padas in a Prayoga, our intention is to get back the Vivaksha from the given package. The Vakta is gone. Now you have only the package. So you have got to unpack it, decode it. You can decode it damaging the content or even the structure. This is what Yaska says. Mantraha prakaranashaha nirvaktavyaha. So the concept of building prakarana is linked to paribhasha. And paribhasha is not built in the lexicon or the thesaurus. Paribhasha is a human context, technicality. If you say boot
the computer. You tell that to an ignorant person, or a very person who doesn't understand. He will just use his foot to boot the computer. He will kick it. But if you tell that to a technical person, boot the computer, he will understand it differently. This is the nirukta part of it, because your prakarana is contextual. So when we get a Vedic translation saying that this is the machine generated translation, without understanding the technicality of the nirukta and its dependency on the vyakarana, and vyakarana's dependency on the shiksha shastra and the chandasa, we have corrupted nirukta. And that is to the detriment of the Indian culture. That is the damage. So corruption of nirukta needs the swara, accent knowledge. And that we have not built in the standards so far. Panini uses one sutra, Aryo Brahmana Kumarayo, Aryaha Brahmana Kumarayo. It's a Vedic rule. Arya Brahmana and Arya Kumara. The context is, what is the samasa in Arya Brahmana and Arya Kumara? These are the two given words. Is it a Tatpurusha or is it a Bahuri? That is the analysis. He says, decide it based upon the accent. If it is accented in the beginning as Arya Brahmana, it is one samasa. If it is Arya Brahmana, it is a different samasa. This is just not needed for the Vedic. If you have understood the Nepalese language, the same sound with different accents communicates different actions. If you have looked at Japanese or Korean, the same thing happens. Spanish, same thing happens. But in English, it is treated differently as emotional swarna. As, am I doing it? Am I doing it? Where you place the stress. Stress is not swara. Stress of the English is not the swara, because the bhava connection, artha connections are different. So this is where Nirukta Shastra understanding has to be anchored to the Vyakarana, and that goes to Shiksha Shastra and the Chandasa. So how does it help? It helps to build a spoken language interface. Why? You do not know how the speaker speaks to the machine in a robot. Okay? Or even the Alexa kind of a model. In the Alexa kind of model, okay, they have made the power of the machine, the brute force, and the large model to work and give a semblance. Yes. But is it logical? Can you not compact it? Can you not zip it? Yes, you can. So if just three word sentence, Ramaha Pustakam Patati, needs the entire Sanskrit grammar, which is enough to teach or decode the entire Sanskrit literature. We can do that with the Nirukta here. That is the power of the grammar. And what is Sanskrit grammar? 4,000 lines. And out of 4,000 lines, you require only maximum 500 to 600 out of them for the Alaukika Prakriya, for the algorithm building. And even out of that, if you can build 20 properly, we would have become Vishwaguru in the AI field. This is where our hidden power lies. Next, sir. So Nirukta helps in decoding valid meanings from the given input sentence, context feeds. This is useful in making context-sensitive data analytics and build intelligent systems. This is the fancy of the day, intelligent systems. We are working on this, work in progress. Language identification in voice is still a block to be crossed. We require help in this particular area. Next. So Nyaya Shastra. So without foundation of the earlier Shastras, that is Pada Shastra, the whole thing, whatever I discussed, was Pada Shastra, word, sentence, formation by voice. When you come to Nyaya Shastra, it is
Pramana Shastra. So between Pada Shastra and Pramana Shastra, Vakya Shastra, Pada Shastra, grammar and other things, Vedangas, and Mimamsa, which is Pramana, Vakya Shastra, we get Pramana Shastra, Nyaya Shastra. So Padavakya Pramanajnaha, this is a common, well-known Sanskrit expression for that. So Pramana Shastra is Nyaya. Parvato, Vaniman, Dhumat is the Anumana. So if you say Parvataha, Rado, Vaniman, Dhumat, it is not correct. Why? It is not in the meaning of the words. It is in the logic. Even an absurd sentence can be grammatically correct, but it is absurd. So, to get to the level of the intelligent discretion, tarka, you have to have the input properly and the analytics properly. And where do we see that in the Kavya? Mammatacharya quotes this as a part of the Dhvani discussion. Saindhavamanaya ityukte. It was the context where two persons had to go. One person had to go from A place to B place. And in another context, it was the food was being served. The expression given was Saindhava Manaya. So for the context, Saindhava means salt in one particular context. Saindhava means a horse in another context. Can we interchange it? Meaning is same. Bring Saindhava. But what is Saindhava? Is it salt or horse? How do you make a filtering? That filtering is the Pramana Shastra. So, the computer scientists and the programmers, when they came to India and looked at Sanskrit, right from Dr. Briggs and all the other people, they looked at this analytics part, algorithm, logic of filtering. But they did not get into the full foundation of the Sanskrit. That is where we have the mistake. So if we are able to build the foundation, fundamental one, then we will be able to use the Nyaya Shastra, which uses the Shaktivada for the meaning construction. And Shaktivada is called beyond semantics to the semiotics, context sensitive, filtered, appropriate meaning, communication. And why is this critical? If you are going to program a missile and launch it to from A point to B to hit, and then your code gets corrupted, then what happens? You can imagine. But look at millennia of the Vedic mantra, whether it is a Purusha Sukta or a Shri Sukta or whatever it is, the application is same, coding is same, benefit is same, whether they get it or not, the target is same. There is a stability, there is a sustainability, there is consistency, and there is a rule base, and there is a practice. Can we port this model into the medicine? Can we port this into weapons? Can we port this into a digital economy? This is where our advantage, disadvantage, and the mindset lies. So, corruption of Nyaya is deeply rooted to the corruption of Varna units, contextual process setting, and slackness. Corrupted Sanskrit word fails to yield Sanskrit Nyaya Shastra deliverables. Now, where do you see this? We are so proud of our Vedanta, Vada Granthas. The very simple, I'll take Kalidasa's sentence without offending anyone in Vedanta. Parvati Parameshwara. Are you going to split it as Parvati Parameshwara and then make a samasa and then the dvivachana of this particular thing? Or you make it Parvati Pa a samasa and then Parameshwara as another samasa and then make it Parvati Pa Rameshwaro Patu? Ingenuity, creativity in this. This is where Nirukta and Nyaya Shastra have to combine together. This is objective, logical analysis of given. We have got lots of things to do that. Next, sir. Next slide. Next slide.
No, next one. Okay. So corruption. Okay, next. Go to the next slide, sir. Okay. So we are working on the Nyaya models of linguistic analysis and what we can apply to Nyaya, the Nyaya algorithms to Sanskrit. It can be applied to any human language because it is a Pramana Shastra. The Pramana is beyond lexicon, beyond the word input. It is the logical analysis. It's a higher thing. It is not the emotions by three colors and you hunt. Okay, where am I by location? Whether I'm in a shop or in a bar. This one. So this is what can improve Watson. This can improve the Watson performance of IBM by leaps and bounds. So we are working on this. Next, Ravi Sharma, I will answer your question, sir, please. Okay. If you are able to get through with this particular thing, then you get to the Mimamsa Shastra. And Mimamsa, as we have in India today, is mainly limited to the Vedic analysis and the Yagna related. But you can bring that Pada Shastra to Vakya Shastra as a sentence analysis, communication analysis by computation to cognition. So we are working on this. Now you understand, if you have corrupted Shiksha Shastra at the base, Vyakarana at the next level, and then Chandas and other things, Nirukta, then how Mimamsa Shastra gets corrupted. Next slide. So this study is for a future time. So if you are able to go through this one, we can do that. Next. Next slide, sir. Then the last one and the most critical is Yoga Shastra. Why is Sanskrit called Vak Yoga by Vedat? And why Patanjali endorses that as a Vak Yoga? And why Patanjali's Yoga 3 model, Yogena Chittasya Padena Vacham Rogam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarottam Pravaram Munina Patanjalim Pranjalayanatusmi. Why did he integrate a health discipline, Ayurveda or Ayur Yoga, and then Yoga Sutra related to Chitta, psyche, and then the language? All these three integrated. What is this Yoga 3 model from 3 Vedas? That Vak Yoga tradition is lost in India for the last 200 years. And what we need is Vak Yoga Vijnana. This is the technicality of Gita, 11th chapter, where Sri Krishna says, Arjuna's simple question, if you think that what you are saying is true, if you think that you are capable of showing whatever you are saying, a very intelligent question, okay, then show it to me. Tat tvam me darshaya, that's the operative part. Then Krishna's answer for that is, okay, I will show you. You will not be able to see it without the Divya Chakshus. What in technical language we call it as Alaukika Prakriya, or the internal programming language, the processes that need to happen. And he says, Paschyame Partha Rupani Shatashotha Sahasrashaha Nana Vidhani Divyani Nana Varna Kriti Nicha. So this Nana Varna Kriti Nicha, in terms of the Shabda Brahma model, not the Vedanta Brahma model, Shabda Brahma model, which connects the spota of the Bhartruhari teaching, which is thought, cognition, understanding a given sentence. First, you have got to say something intelligently, code it, vakta, vadati, shrota, shrunoti, then shrota, artham, grunhanti. This is samvada. This is the totality of Gita. Samvad. Sambhashan is the same thing. But to do that, the process in the speaker's mind is different from the conveyance to the coding, decoding, transmission, and then the analytics, filtering, all that has to take place. For that, the structural integrity of the Nana Varna Kriti, the character set transmission, lossless, reconstructible, is critical. That is Nana Varna Kriti. So that is the Yoga Shastra.
Vak Yoga starts from Varna Akshara Samamnaya Yoga. And we teach that in the elementary schools, saying Swara Vyanjana. After that, we teach Gunitakshar, Samyuktakshar, Barakhadi. Barakhadi is a unique model of teaching English, the Indian languages. There is no Barakhadi in English. There is no Barakhadi in French. There is no Barakhadi in Latin. There is no Barakhadi in Chinese. But they all use the dhonimas. But the basic logic of the Barakhadi, स्वर से स्वर जुड़े, व्यंजन से स्वर जुड़े, व्यंजन से व्यंजन जुड़े. This particular model, if you have to say Lakshmi, La is one unit, Ka, Sha, Ma, E, Lakshmi, then Anuswar and the Visarga. Is it going to be representable by one character or two byte code system? Dhvanima, it doesn't. So this is where the Yoga Shastra of the Nana Varnakriti comes. It's a work in progress. Next slide, sir. So we are working on this with a hardware product, which is Sanskrit Varnakshar native design following Shiva Sutra Sastry. So this is the output, the product, the hardware product, hands-on, touch it, that we designed, where you can touch a input device which has a true sound mapping. This is a phonetic keyboard. Script on the top is only a layer. You can change it to 16 scripts, 22 languages of India, or even to Chinese, Arabic, and all these things, or even to English. But this is a voice input model keyboard. Lot of technicalities there. I thank my friend Guru Prasad, Dr. Guru Prasad, who has done a lot of work in making this circuitry, coding, and all these things. Okay, a lot of work is there on the GitHub also, if people want to look up. So, keyboard reformation from the Roman script input model, overlay models, which we have been using so far, to a voice primary input, a voice primary integration, which can accommodate all world languages by voice. This is where we started. Okay, this is based on the Panini Shiva Sutra. This is my baby step in this direction, and this is where I require collaboration from the leaders and the influencers like you. So Shiksha Shastra, why we are focusing on the Aksharmala first is Aksharmala is the first step in language formal learning. Okay, next steps. Next. So Sanskrit Shastra overview starting to end, point and vector. Which Shastras help us? How? Shiksha, Vyakarana, Chandas, Nirukta, Nyaya, Mimamsa, Yoga. So this is where the whole structure is shown. Vector points to the criticality of Varna Akshar Samamnaya, Panini Shiva Sutra anchor of Sanskritam. So Sanskritam is not just one language of a historic nature. It is a universal human language. So to get to that level, we have to go to the Shiva Sutra and we have to have an interface for that. If I replace this particular device with a microphone, where are you going to touch anything? Where is your input point? Finger touch, tactile touch. Where is it? And if I have got to program this voice mechanism and the ear, the speaking mechanism, output mechanism, and the input mechanism, and the process mechanism here, if these three things are to be integrated, that is Panini Samskritam. That is Sanskrit computer. For this, we require a hardware, a software, a language programming model, and then a vision to build this. So what we have done is bits and pieces by hardware, keyboard, an operating system model called Soil and Upamedha, programming this one, and then Panini, Varna Sankhya, Sanketa Sarini, a table to notate Panini Shiva Sutra based dhvanimas, which can be fitted into the 16-bit coding, or we can expand it to 32-bit.
which goes together with Unicode. You don't have to kind of drop it down as a hot cake. So the limitation of the ASCII has been identified. The need to progress on Sanskrit basics is also identified. And language commonalities are not enough, not sufficient for programming Sanskrit standard appropriate interfaces. So this is where I believe that we have an edge with all the team over here for the collaboration. We can build more courses and other things, interaction. If we do it properly, we may just need less than 2 years to be leaders in the AI, in the world. What dreams have been set, we can do it. We have the manpower, we have the knowledge power, we have the hardware power. If we can launch a rocket to go to the other side of the moon, why not this? We can. But do we have the mindset for that? Next slide, sir. So this is Panini Shiva Sutra. It can be the dance of Shiva, it can be the dance of Vishnu, it can be the dance of Mohini, it can be Mohiniyattam, Bharatanatyam, Kuchipudi, it doesn't matter. But every dance form uses this Kala Tal Man, which is Bharata's Natya Shastra. Bhav Rag Tal, they use that particular thing. So if we are able to integrate that into the hardware system, we have a human assistant which can work with human languages. So ASCII is a subset derivable from Shiva Sutra. This is the conclusion. But what we are doing right now is force fitting sardine packing of Sanskrit into the ASCII, which is inappropriate. So this is where I say language technology to language appropriate technology. Next slide, sir. So the whole structure goes generation, speaker phase, Ucharan, that's part one, we have got to work. Transmission phase, Samvahana, we have got to work. And then part three, recipient, beneficiary, listener phase, Shravana. Ucharan, Samvahan, Manan. Okay, generate the speech, voice, words, transmit it, code it, and then recipient decode it. This is the cluster of the 7 Shastras, what we discuss now. This whole process is called Vako Vakyam, true and total integration of all above processes for practical practice and get benefit. We are not here to send anybody to moksha. We are here to make life good in this place, okay, where we live. And we want to build a vibrant digital economy. Next slide, sir. So classical Sanskrit articulation, this is my repetition. We want to move from programming language model to AI model. Next. And with that, thank you. Now is the time to open up for all the questions. I hope I have presented my thoughts in not offending anybody. Okay. If there is any offense or anything misunderstanding, please excuse me for this particular thing. Now, before I go further, Ashutoshji, open that 1 to 10 points what you brought up. सर उससे पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं, सचमुच मैं बहुत वर्षों से एक अपनी जड़ता में ही रुका हुआ था और मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था कि इस कंप्यूटेशनल संस्कृत के विषय को किस तरह से विस्तारित किया जाए, किस तरह से इसको ज़्यादा उपयोगी और जो है स्टूडेंट फ्रेंडली हम इसको बना सकें। और आज आपके इस सारे वक्तव्य को सुनकर के, लेक्चर को सुनकर के और जिस तरह से आपने लगभग बहुत सारे मेरे प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया है और दिशा निर्देश दिया है, उसके लिए तो वाकई आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी विद्वत्ता को, और जितनी सहजता से आपने ये बातें हमारे साथ साझी की हैं, इसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं कि ऐसी विद्वत्ता के लिए तो हम रश्क कर सकते हैं कि आप जैसी विद्वत्ता हम सभी को प्राप्त हो। और अभी मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि आप जो मैंने आपके साथ प्रश्न साझे किए थे, उससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि हमारे कई सारे वक्ता, उनकी बहुत अधिक रुचि आपके साथ इंटरैक्ट करने में है। तो मैं चाहूँगा कि सीधे पहले उनसे बात कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर समय होगा तो इन सब के ऊपर आपकी मैं टिप्पणी लूँगा। और इससे पहले कि मैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर रवि शर्मा जी को आमंत्रित करूँ,
मैं एक अपने साथी को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, मेरी प्रमादवश मेरे से उनका नाम रह गया। डॉक्टर राजेंद्रा डॉक्टर राजेंद्रा जो पूर्व में अध्यक्ष थे संस्कृत विभाग जीएमएन कॉलेज में, उन्होंने कंप्यूटेशनल संस्कृत के ऊपर बहुत काम किया। वो हरियाणा में प्रथम महिला हैं जिन्होंने कंप्यूटेशनल संस्कृत के लिए लैंग्वेज लैब भी अपने कॉलेज में एस्टैब्लिश की, बहुत संघर्ष के बाद। और उसके अतिरिक्त उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिसमें उन्होंने फार्मास्यूटिकल आयुर्वेद और उसके अतिरिक्त आईसीसीआर के कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं, अगर उनका नाम प्रमादवश पहले रह गया था, तो मैं उसको ज़रूर स्वीकार करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर रवि शर्मा जी, जो इस वक्त नासा के एडवाइज़र हैं, इसरो को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है और वो आपसे संवाद करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और मेरी तो यही उपलब्धि है कि विद्वान जब आपस में संवाद करें, तो उनको हम सुन सकें। यही मेरी तो उपलब्धि है। तो सबसे जी पहले डॉक्टर रवि शर्मा जी। जी आप आशुतोष जी को पहले, गुरु को पहले और भगवान को बाद में, इसलिए उस क्रम में आशुतोष जी को पहले नमस्कार और धन्यवाद कि आपने एक बड़ा हीरा हमारे बीच में ढूंढ लिया है इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेसर B.V. के शास्त्री. I think I have not seen this level of width and depth. Also modernized way of thinking, because ultimately we will use tools like AI and robotics. So if our root thinking, which in all Indians is somewhere connected to Sanskrit, is not connected to the output devices which we will want to use, including AI, robotics, surgery, whatever, manufacturing. So this width in one lecture, what a wonderful briefing, Shastri ji, you have given. I am here to praise you, praise you, praise you, and collaborate with you. I will share my email with you and request you now to kindly tell us which areas you think in your effort would help in expanding or concentrating your collaborations. But prior to that, I have two things to convey, sir. From Brihadaranyaka Upanishad, there is Shrotravyam, Drishtavyam, Mantavyam, Nididhyasitavyam. So you have taken us to Shrotravyam and Mantavyam level, but kindly remember these other two. One is visual aspect of understanding, and obviously very difficult for me to comprehend, but for you people it is easier, is Nididhyasan. It's hard for me, I am a physicist, more adhibhautik. So, Shastri ji, these were two comments, and I am looking for a LLM of Sanskrit uh, on the levels which, using your key documents and paddhati, we should be able to generate not only phonetic but other versions of LLMs, which are the basis. Combining with ontology, we can reach AI objectives. Hopefully, uh, better AI for benefit of humankind rather than cyber crimes. Thank you. Namaskara. रवि शर्मा जी, आपके लिए बहुत धन्यवाद. Thank you for the prize. The whole philosophy is based upon Nam Roop Yog. That is the key. So, if you are taking this Nam Roop Yoga to the Atma Sakshatkar, that is a different direction. Sure. But you are touching Nam Roop Yoga for the Vignan, which you said as a visual. Okay? Yeah. Now, building an LLM of Sanskrit is building LLM of thought articulation, which is a universal human.
I can share you more details on the email, or we can talk separately on this particular point, because the interface design, what we have got here, addresses the Lipi Shastra first, the scripting models. Okay, if we replace this with a microphone, it has to be slightly different, but Sure. the core will still be the voice primaries, which are from Shiva Sutra. So that becomes too technical to discuss on that. I will share you my email. Ashutosh can put it on the chat. You have got my जी, email on this particular thing, and you can send me the details. I'll be certainly happy to, work under leadership of all the persons. I don't claim myself to be, a top leader on this particular thing. So I am Sahadharma, Sahacharya is the basic thing that I look for. Wonderful. We work together on that. Sir, So, sir, one more small comment after you finish. okay, Sahacharya is what we do, and when we do that Sahacharya, uh, who is the beneficiary? The beneficiary is you and me first. It is nobody else. First is you and me who work on this particular thing. If we jump into water, we are the ones who get wet first Yes. before others. So let's work on this particular thing for the good of all and realize what we can do. Certainly, we It, can wo- do it it. would be great to collaborate with you. And I am a trustee in an ontology forum. I am also working on Vedic particle physics. So, with these two interests, I would do everything possible to find collaboration opportunities and maybe some papers. Yeah, so we need to get some kind of a research funding or a grant on this particular thing. This is a very small circle at the top. It's crowded. Okay, you probably Dr. Bijoy Mishra, who's in New York, or Ramlakan Pandey in the Science of Consciousness group, Paul Webros, who was the ex-advisor of the what is it, DARPA, and other people. Okay, there are any number of persons, but it's a very crowded thing. Girish Nath Jha himself is very well acquainted, and he is in a good position to help it. Uh, I don't know where you are located. In case you are in Delhi, are you in Delhi? No, No, I'm in either Sacramento area, California, or Okay. Jaipur. Or Yeah. Jaipur. Jaipur is fine. Currently, I'm in Jaipur. Jaipur is fine. Okay. Sacramento, you have got to take care of the fires that are going on right now. The whole area. That's down south where my son lives in LA. Okay. So that's the situation. I'll share more details on the email. Yes, sir. We can talk about Are that. you in which part of Florida are you located in? Technically, I am located to Orlando and Sarasota. That's where I have spent most of my time. Yeah. Michigan, Canton is the place where my brother lives. And in Arizona, Phoenix, my other friend Yadu lives. I keep moving around some of these places. And in New Jersey, few other places. Yes. Sir, I got my PhD in 1966 from Gainesville, Oh, University of Florida, before I moved to Yale. So very nice nice, to know that, sir. Nice to know very that. close to you. Yeah. Yeah, very nice to know that. सर मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा आप दोनों के एक दूसरे के साथ तो Very Just kind of send you. me I an have lot of things to talk. One of them is the coding of these aksharas, the Maheshwar Sutras, etc., in multidimensional mathematics by Dr. S.K. Kapoor, the Yeah. retired judge of Haryana. Yeah, जी I'm aware of that. And I think he has used Siri Bhuvalaya for the coding, one of those Yes. mathematical texts. Yes, I'm aware of that. Yes, sir. चलिए बाकी को And there आगे is बढ़ाते हैं IAVM in South India, Yeah, I'm IAVM in Kerala. yeah. Thank you. हाँ इससे पहले कि मैं डॉक्टर देवदत्त जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से उनको आमंत्रित करूं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे साथ ग्लोबल आईटीएंस फॉर क्वांटम कॉन्शियसनेस के डायरेक्टर श्री आनंद प्रकाश जी और उनके साथ श्री
सुश्री स्वीति गुप्ता जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम बहुत जल्दी कोलैबोरेशंस करने जा रहे हैं। और बाकी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं इंस्टीट्यूट से, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि उनके साथ जीआई फॉर क्यूसी के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशंस जो हैं ओपन हैं। तो आईआईटियंस की वो फोरम है, और मैं चाहूंगा कि वो बाद में आप सबके साथ इस सारे विषय पे बात भी करें। तो उससे पहले डॉक्टर देवदत्त जी। जी, तो देवदत्त जी अपने को अनम्यूट कर लें। सभी को प्रणाम। मैं देवदत्त शर्मा एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च स्कॉलर हूँ। और वही बात है कि सबसे पहले सभी को महाकुंभ और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जब कोई काम होना होता है तो वो तभी होता है। हमने ये पिछले बार भी ये सेमिनार कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ हडल्स आ गए थे, तो ये काम शायद आज ही होना था। और आशुतोष सर को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि आशुतोष सर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक ग्रुप या कुछ ऐसा फॉर्म करे जहां पे ये हम थोड़ा शेयर कर सके कोडिंग से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन भी है, और कोलैबोरेशन के लिए तो मैंने मैसेज डाला ही है। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ आनंद प्रकाश सर की तरफ से आईआईटीएन ग्लोबल फॉर्म जो है उनकी तरफ से कोलैबोरेशन करना चाहूंगा इसमें। और मैं इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, यूएन ने क्वांटम ईयर डिक्लेयर किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहित सारे देशों ने क्वांटम बजट अलग से निकाला है। तो और इसमें हम एडवांस, जैसे बोला है सिरी भूगोल वो ग्रंथ वाली, उसको एडवांस मैथमेटिक्स भी डाल सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग सबसे बेस्ट है संस्कृत के लिए, क्योंकि इसमें कम से कम रिसोर्स में हम ज्यादा से ज्यादा कोडिंग लिख सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि इसमें एक आज बहुत अच्छा दिन है और एक सॉलिड शुरुआत हो। और मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जैसे सिलिकॉन उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उससे, मतलब कि सिलिकॉन को हम कौन से उससे क्वांटम डॉट से रिप्लेस करें या कोई किसी अदर एटम से। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है। और बाकी मैं ये चाहता हूँ कि आनंद प्रकाश सर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से डाले, और कोलैबोरेशन के बारे में एक जैसे रवि सर ने बताया एक कंक्रीट लेवल पे शुरुआत हो। आज बहुत ही शुभ दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। thank you, Devdutt ji. I heard you on that other conference, global IIT, which happened a few days ago. I heard you on that particular thing. Your interest in quantum computing and other things. Actually, I have presented the linguistic perspective of the language technology and the work done. To speak in very technical terms, I would be needing my other friend, Dr. Gopi Bulsu and Dr. Guru Prasad. Guru Prasad is the one who designed the hardware part of this particular thing. Okay. Yes, yes, okay, beautiful. And Dr. Gopi Bulsu is working on SBOC. What is that? Brain and chip. Okay, that level. And he is the one who worked on the Paninian transformations for me. So they are in Visakhapatnam, Hyderabad. And they did the work about 15-20 years ago. A lot of things are going on. There are other people which Jha knows about it. Okay, he also is a very resourceful person. We can work together. Probably the collaboration models has to be a consortium. Okay, it can be because different people have different resources and everything needs to be integrated. Like making a car to go out to the showroom requires an engine maker as well as an upholstery maker and somebody to sell it also. Okay, so like that, the consortium has to be made. Maybe Ashutosh ji becomes a nodal point to connect these people for one more, what you call a focused meeting. I can invite some of my other friends to talk to each other, and then the goal should be, as Ravi Sharma ji said, we will build a LLM of Panini. Okay. Why I use the word Panini is when we say Sanskrit, everybody claims that it is their business or reject it. So when we say Panini,
there is a very specific person and a tradition which goes with that particular thing. That's all. It's a very kind of practical thing that is going on. There's nothing, prejudice in that particular. You want to call it Abhinav Gupta, that's fine with me. So I got no problem on that. Okay. Or you want to call Devdatji's programming, okay, I have no problem with that. Okay. The work has to happen. So we will work on this particular thing. It can be done. Now, regarding the replaceability or substitutability or complementing a silicon with a carbon or something alternative, this is where we require a study of three metals: copper, silver, and gold. Three materials have to be studied for their physical properties and how to handle it. Mercury is not the line to go. Copper, silver, gold. Why these three? Because these three seem to be traditionally known to receive the voice energy, whatever the thing comes, beyond much more powerful than carbon. Well, right now it's an axiom. There is a tradition behind that. Let's work on that. जी, ओके धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसी और का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी अगर कोई है तो वो हमारे साथ साझा कर सकता है। उसके साथ मैं चाहूंगा कि हमारे साथ प्रोफेसर संजय शर्मा जी, जो डीन हैं साइंसेस के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि वो इस विषय के बारे में अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। जी, नमस्कार आशुतोष जी, और नमस्कार सभी को। आशुतोष जी को विशेष नमस्कार इसलिए क्योंकि वो गहरे समुद्र में गहरा गोता लगाते हैं और वहां से हमारे लिए जो है हर बार ऐसे मोती लेके आते हैं कि हम सब चकित रह जाते हैं वास्तव में। आज प्रोफेसर बीवी के शास्त्री जी को आपने लाकर वास्तव में हिंदुस्तान के शायद जितने कंप्यूटर्स में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को सुनने के लिए एक लेक्चर था। ये आपका जो ये लेक्चर आपने स्टोर किया है, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम लोगों को देने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वास्तव में हम लोग इसी आज की कोड पे ही सारा का सारा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और जितने लैंग्वेज के प्रोग्राम दुनिया भर की रिसर्च और पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर वो इस चीज को सुन लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वास्तव में हम एआई का भी हल्ला किए हुए हैं। एआई की टर्म 1958 से चल रही है, लेकिन किस तरीके से और इसको यूज करके 40 टाइम्स फास्टर और सिर्फ 486 पे प्रोग्रामिंग चला रहे हैं। इट्स रियली इमेजिंग। हम लोग बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के पेंटाफ्लॉप्स एंड ऑल दैट, लेकिन वास्तव में अगर इसको समझ के जाएंगे तो भारत वास्तव में, चूंकि ये भारत की धरोहर है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो इसको समझना पड़ेगा। और मैं प्रोफेसर बीवी के शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों में यहाँ पे कुछ सेंटर्स के थ्रू कुछ इस तरह का काम आगे बढ़ाएंगे कि निश्चित रूप से ये भारत माता का आशीर्वाद सभी को मिल पाएगा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। इतने अपनी बातों को, टेक्निकल चीजों को कहते हुए और हर चीज में उस चीज को स्पष्ट तरीके से, मतलब बिल्कुल जैसे कह रहे हैं, जितनी विनम्रता, जो कहते हैं ना कि महान पेड़ हो जाता है और वो झुक जाता है, उसमें फल आते हैं तो झुक जाता है, वैसे डॉक्टर साहब का ये व्यक्तित्व हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है और जीवन में उतारने वाला है। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। इतना ही मेरा कमेंट था, इससे ज्यादा तो शब्द शांत नहीं रह पाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद श्री आनंद प्रकाश जी, उन्होंने हाथ उठाया। उसके बाद डॉक्टर सुभाष यादव जी, डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी। प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री जी, धन्यवाद आशुतोष जी। जैसा कि बाकी सब लोग कह चुके हैं कि पूरा का पूरा सेशन इतना यूनिवर्सल कॉम्प्रहेंसिव था, और मैं यही बात कहूँगा क्योंकि मैं तो आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो जैसे जैसे वो बोल रहे थे, पिछले 35 साल में जो भी आईटी इंडस्ट्री में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम हुआ है, वो सारी चीज़ें याद होती आ रही थी, चाहे वो यूनिकोड की हो, चाहे एस्की की बात हो, चाहे पेंटियम की बात हो, चाहे 486 की बात हो। एक जो सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर शास्त्री जी ने जो बात कही कि हम जो
पैच वर्क करने की कोशिश करते हैं अपने अपने चाहे पाणिनि संस्कृत की बात है या जो भी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के ज्ञान को करंट टेक्नोलॉजी में एक पैच वर्क की तरह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो मेरे को शास्त्री जी से बहुत अच्छी बात लगी कि वी हैव टू कंप्लीटली ड्रॉ अ डिफरेंट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने श्रुति का जो बात कही, जो इंटरफेस की बात कही या प्रोसेसिंग की बात कही या एल्गोरिथम डिजाइन की बात कही या यूजर इंटरफेस की बात कही, तो वो आई थिंक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ग्लोबल आईटीएंस फॉर क्वांटम कॉन्शियसनेस भी एक छोटी सी संस्था है, बहुत यंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन विद गॉड ग्रेस वी हैव गॉट मेनी रिसोर्सफुल पीपल गेटिंग कनेक्टेड। तो हम चाहेंगे कि ऑफलाइन डॉक्टर शास्त्री से बात करें और कैसे हम उसमें से छोटा एक प्रोजेक्ट करके और इस पूरे महान इनिशिएटिव में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। धन्यवाद। और आनंद जी, मैं जरूर चाहूंगा कि डॉक्टर रवि शर्मा जी हमारे साथ यहीं पे जुड़े हुए हैं, जो नासा से हैं, तो जी मैंने उनसे सुना भी उनको। हाँ, Well, उनके साथ भी संपर्क करें जी। एक्चुअली अगर हम बहुत गूढ़ रूप से देखेंगे, क्षमा करें बोल रहा हूँ बीच में, गूढ़ रूप से देखें तो क्वांटम कॉन्सेप्ट्स भी संस्कृत के उद्गम से ही जुड़े हुए हैं कई, तो जिनसे जिनसे आइंस्टाइन और कई लोगों ने प्रेरणा ली थी। वो हम अलग से विषय कभी करेंगे, लेकिन उसका जरूर इसमें आपके शोध के एआई वाले पार्ट में क्वांटम इंफॉर्मेशन बहुत गूढ़तम जुड़ी हुई है फिजिक्स और क्वांटम की दृष्टि से, लेकिन संस्कृत भी उसमें काफी सहायक हो सकती है। जी सर, जी सर, जी सर। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष जदू जी और डॉक्टर चित्तरंजन कौशल जी, जो डायरेक्टर हैं संस्कृत एकेडमी हरियाणा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उससे पहले सुभाष जी जी। Professor Shastri ji, am I audible? Yeah, please speak a little louder. Okay. Professor Shastri, I am not a computer giant. I am not a coder, not a programmer. I am a common Indian citizen. I am delighted when you set a stone on the basis that if computer language Sanskrit has to be adopted, it will be based on Panini's grammar. And I was so important from your mouth to listen that it is hardly some 2000 lines which completes the Panini grammar for computer programming. It was so delight to see your summarization of Panini's grammar. I remember when we were, by profession, I was a bureaucrat. So please don't degrade my name. So we have a setup in the country, which we have recently started naming as Bharat. We have one full-fledged ministry called Hindi Vibhag. And for all along past 40 years, we have been fighting on getting codes defined for translation of Hindi into English, Sanskrit into English, and all along for these 40 years, that translation is still at bay. We have not been able to do it. Thank you, Professor Shastri, that you have given the basic reason why we have not been able to get a success in that translation is because we never took Panini's grammar as a base at the point of translation. I am so delighted that if we are putting a phase into our future that we will take Panini's grammar as a base and then adopt Sanskrit as a language for computation. I think hats off to you and all those who are in our audience as well, because they are no too less about it. I am delighted once more to share with you that if this feature of understanding the psycho of our own civilization is brought into computerization, it will be no less. Maybe we will give opportunity to more Bohr models, more Einsteinian models, more Heisenberg curves to come up if this process is really adopted into. Thank you, Professor Shastri. And Ashutosh, no less thanks for you to. Shastri ji gave a good line that if you dip in water, who gets wet?
Thank you very much for that line, Shastri ji and Ashutosh. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. डॉक्टर चित्तरंजन दयाल कौशल जी, संक्षिप्त से हाँ जी, बस टिप्पणी मेरा करिए। तो यही भाव है। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज ही ये ऐसा सुंदर वक्तव्य सुनकर के मन गदगद हुआ, और मुझे तो गीता का एक श्लोक याद आ रहा था कि यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। और बीबी के शास्त्री जी ने जो इतना ज्ञान का भंडार आज उड़ेला है, उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, और भारत जगत गुरु के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। और निश्चित रूप से इनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन में यदि हमारी युवा पीढ़ी जो इस क्षेत्र में आगे काम कर रही है, हम लोग तो अनाड़ी हैं वही, किंतु बड़ी खुशी होती है कि जो हमारी भारतीय संस्कृत की ज्ञान विज्ञान परंपरा का सारा ज्ञान है, उसको ये डिजिटाइज कर रहे हैं और एआई की ओर मुड़ रहे हैं। आज का युग है एआई का, और उसमें हमारा बीबी के शास्त्री जैसे जो विद्वान हैं, उनका जो कर्तृत्व है, व्यक्तित्व है, वो बड़ी प्रेरणा देने वाला है। और आशुतोष जी को भी बहुत बहुत हृदय से बधाई कि वो इस कार्य के अंदर सबको जोड़ रहे हैं, और जोड़ने से ही सिद्धि प्राप्त होगी निश्चित रूप से। बहुत बहुत सबको नमन। जितने विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। सबको सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक प्रयास करके हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके संस्कृत विभाग हैं और कंप्यूटर विभाग हैं, उनके साथ एक टाई अप सा करके या उनके साथ एक मीटिंग जो है, बिल्कुल बिल्कुल ये संभव है, ये संभव है। आपके मार्गदर्शन कर लेंगे हम, बिल्कुल जी, और निश्चित रूप से इसको बहुत जल्दी ही कर लें, बिल्कुल ना जी। ये एक प्रयास अगर आप कर लें तो अद्भुत अच्छा। जी। जी, इसके अतिरिक्त और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी हिस्ट्री विभाग से हैं, सिरसा यूनिवर्सिटी से। जी सभी को नमस्कार और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बहुत ही मैं आधा सुन पाया दुर्भाग्य से, लेकिन जो जितना सुना बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक रहा। जहाँ तक संस्कृत की बात है, मैं वैसे तो साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूँ, लेकिन जो बात अभी शर्मा जी साहब कह रहे थे, मैंने परसों मंत्री जी के सामने NEP 2020 की एक मीटिंग में मुरथल में साइंस टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा उठाया था कि इस यूनिवर्सिटी में भी संस्कृत डिपार्टमेंट खोला जाए, ताकि संस्कृत के ग्रंथों पर वैज्ञानिक ढंग से काम किया जा सके। और 3 विषय और थे वहां, सबके सामने मैंने रखा। मंत्री जी को भी कहा कि हरियाणा के अंदर 5-6 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें अभी डिपार्टमेंट ही नहीं है MA लेवल पर। उनको जब तक काम नहीं करवाएंगे आप, तब तक काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं संस्कृत के हमारे जो अभी डायरेक्टर साहब बैठे थे, इनसे भी निवेदन करूँ कि वो भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि जींद में कन्या महाविद्यालय, जो कि कन्या जो विश्वविद्यालय है कानपुर का, ये गुरुकुल से यूनिवर्सिटी बनी है, और वहाँ भी संस्कृत डिपार्टमेंट अभी तक नहीं है। टेक्निकल फील्ड है ही नहीं। भिवानी जो है मिनी काशी है कहते हैं इसको, उसमें भी यूनिवर्सिटी में अभी तक डिपार्टमेंट संस्कृत का नहीं है। रिवाड़ी के अंदर भी नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, पर अपने प्रयास करें अपने अपने हिसाब से, और इसका क्षेत्र जो है इसको वाइड करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन और आग्रह ये रहेगा कि संस्कृत डिपार्टमेंट हो ना हो, लेकिन IKS डिपार्टमेंट जरूर खुलवाने का प्रयास करें। जी जी जी। उसमें संस्कृत के आधार पे ही वो सारे विषयों को अग्रसर करने का हम कोशिश कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि IKS डिपार्टमेंट जो है ना, वो यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए। हाँ, मैंने वहाँ यही कहा था मुरथल में कि जी IKS संस्कृत के संभव कैसे है। हाँ, कुछ तो करो इसके लिए, तब बात बनेगी। तो कहने लगे VC भी थे, मंत्री जी भी थे, कहने लगे देखते हैं, अच्छा सुझाव है, प्रयास करेंगे। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी और किसने अपना? अक्षय चैतन्य जी, अक्षय चैतन्य। हाँ, अक्षय चैतन्य जी। नमस्कार। ये प्रश्न कुछ विषयांतर हल्का सा लग सकता है, पर विषय के अनुकूल ही है। As you mentioned about algorithms, currently I'm working on the ancient algorithms of IndusScript, और since वो एक ancient संस्कृत का ही वर्जन है,
और सभी को पता है कि एंशिएंट संस्कृत डेवलप्ड फ्रॉम साउंड्स टू सिंबल्स टू स्क्रिप्ट एंड द थिंग गोज ऑन टिल द करंट सिनेरियो। तो ये है कि जब एंशिएंट एल्गोरिथम्स जैसे इंडस पे हम लोग काम करते हैं तो क्रिप्टोग्राम और जो आधुनिक मेथड्स हैं वो पूरे के पूरे कारगर सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो दे आर वेरियस स्कॉलर्स हु आर ट्राइंग टू प्रूव that every symbol is equal to one alphabet, which seems to be not possible. So what do you suggest about decoding, deciphering that angle? Because you mentioned in your speech that one subject or one topic is not enough to decode or decipher or to understand the issue. अक्षय चैतन्य जी, डॉक्टर साहब इससे पहले मैं परिचय दे दूं, डॉक्टर अक्षय जी जो हैं ये स्वामी हैं, इन्होंने संन्यास लिया हुआ है, लेकिन इनका चारवाक मैनेजमेंट को लेकर के, उसकी एप्लीकेशंस को लेकर के कॉर्पोरेट सेक्टर में उस पर बहुत काम किया है, और साथ ही साथ इन्होंने महाभारत में जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उस पर काफी काम किया है। तो वो अभी लेक्चर इनका ड्यू है, सेकंड लेक्चर चारवाक मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो इनका लेक्चर हम लोगों ने सुना है और बहुत संभावनाएं हैं, तो वो परिचय कराना मुझे लगता है बहुत आवश्यक था। तो जी, अब आप रिस्पॉन्ड करें सर। Okay, Akshay Chaitanya ji, your question is technical. Okay, so the first thing is voice comes first, script comes later as a convention. So for the IVC and all the other, these kind of evidence things where we see a script, we have got to go by two things. What is the language design, which historically, for various reasons, it can be Sanskrit, it can be Proto-Sanskrit, it can be Tamil, it can be anything. Don't care about that particular thing. But investigation is required on what was the language's design between Vyasa and Valmiki. That's about minimum 3 millennia. Okay? And post Vyasa, if we see the Arthashastrakaras saying that, okay, this is to be written like this and all that. So what was the legacy of the Lipi Shastra? Scripting the voice. Just to say Panini refers to a lipikar, okay, lipikar, it is not enough. Panini refers to a lipik because it has been a tradition. Okay, Mahabhashya refers to a scripting on a leaf using a needle and a blood. Okay, that's a different story, gory story. But what was the Shastra, Lipi Shastra of the Bharat, which comes from Valmiki to Vyasa? That we have not investigated. What we are depending upon is the given Tower of Babel story, migration story, Aryan theory, and the evolution of the script. Evolution of the script depends upon the technology and materials of writing, but the script itself does not change the voice. So when we have the voice consistency right from pre-IVC to post-IVC, why are we not able to locate the scripting conventions of the Panini, not the Panini, Vyasa and the Valmiki, that range? Where is our native research on that? We have not done it. And when we say, this is the shloka of the Gita, I'm not going to Vedas. When we say, this is the standard version of the Gita, 700 shlokas or 701 or 715, at least there is a major section that is common. How was that scripted? Mahabharat research that took place in the Deccan, this one, Mahabharat Samshodhana, they identified several scripts, several writings, Bombay version, Bengal version, Karnataka version, and all that. So where is that Lipi Shastra? So that is what comes from the Artha Shastra of the Chanakya, that particular tradition. Of the Bharata, where the literature was documented, penned. So if we do that research, we get a solution. To be very specific, after finding the IVC seals and Harappa Mohenjo-daro, all this kind of a thing, the researchers between the Madhav Shastri and S.R. Rao,
there was a difference of opinion. Should it be framed under Tolkappiyam Tamil model, or should it be framed under Panini Sanskrit model? What historically got preference was the Tamil model, and the people have gone in that particular direction. But the very native Sanskrit model of the Brahmi inscriptions or the Harappan inscriptions has not been done. So if we can take up that, the steps will be Lipi Shastra as a discipline of Indian language scripting, true voice. The standard is Satyavak, Satya Lekhana, Ukta Lekhana. If you are able to get this, then you will be understand right from Ashokan inscriptions to the Rudradaman to the later ones and everywhere, including the Tantra Shastras and the IVC properly. We have not done it. We have just imported Tower of Babel story and consumed it, and we are doing our research. If we can do that, we can certainly get it. And to some extent, I have done work because this Loganathan from the other side of the world, he asked me to decode that Sumer documents. I decoded them in pure, simple Anushtup for whatever he gave and showed a total grammatical this one, at least about some 10 to 15 documents. I said, if we pursue this, we get it. But then the linguistic, what you call the prejudices, have been a big block in this study. That's it. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई प्रश्न है? और मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र मलिक और डॉक्टर नीरज शर्मा, एक ने पंजाब में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो है लैंग्वेज लैब एस्टेब्लिश करके संस्कृत कंप्यूटेशनल को चलाया है, तो मैं चाहूंगा कि अगर वो अपनी बात रखना चाहें या शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर राजेंद्र एंड डॉक्टर नीरज शर्मा, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात। ओके, चलिए किसी और का कोई जी, किसी और का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी कमेंट कुछ करना चाहता है? नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम यहाँ बीए लेवल पर संस्कृत लिटरेचर पढ़ा रहे हैं जी, तो संस्कृत लिटरेचर को कंप्यूटेशनल संस्कृत के साथ हम किस तरह से जोड़कर अलग से माइनर कोर्स के बीच में, मेजर तो हमारा संस्कृत इलेक्टिव चल ही रहा है संस्कृत लिटरेचर, माइनर के साथ हम 2 क्रेडिट्स का किस तरह से उसके साथ कोई कोर्स शुरू कर सकते हैं? जी, उसका एक अभी मीटिंग रखेंगे हम लोग, जब श्री आनंद प्रकाश जी जब ये मीटिंग्स करेंगे आईकेएस के ऊपर या भारतीय नॉलेज सिस्टम के ऊपर, तो उसमें फिर कोर्स डिजाइन्स की एक मीटिंग रखेंगे, तो उसमें इन सब चीज़ों को, इश्यूज को टेकअप करेंगे। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि भारतीय नॉलेज सिस्टम के पूरा सब्जेक्ट और उसमें जो कंप्यूटेशनल संस्कृत का इशू है, वो निकट फ्यूचर में जो है वो जब मीटिंग्स करेंगे और कोलैबोरेशंस करेंगे, तो निश्चित रूप से उन विषयों को लेंगे और बड़ी जल्दी इसका सारा कोर्स फ्रेमवर्क हम लोग कर पाएंगे। जी, डॉक्टर राजेंद्र, आप कुछ या किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई बात कहना चाहता है? नहीं तो धन्यवाद ज्ञापन करें और आज के फिर इस चर्चा को, संवाद को हम यहीं विश्राम देंगे। जी सर। Ashutosh ji, before that 1 to 10 points, the slides, can you just go back to that? Okay. Okay. Now this is what you asked, how this study can help. Formal language theory. If we understand the Paninian design of the bhasha first, okay, no intelligent grammarian will mix up 2 languages in one particular grammar book. Okay, Panini codes Vedic Sanskrit and Lokbhasha Sanskrit, 2 grammars together. So what is the top level concept of the formal language theory? So we need to get to that. So that is where we need to think out of the box from the Chomsky model and other formal language theories. Okay, Bobo theory, Wo theory, and all that has been given to us from 18th century. Okay, first thing.
How to use it? It will be useful for developing Sanskrit programming, Sanskrit AI. Second one, AI and natural language processing. If we understand what is thought articulation as language processing of thought, that gives us the natural language understanding. If we understand natural language processing, then we will be able to provide a mathematical model of that as artificial intelligence. So we need to do Indian language understanding per se, not on the given imported models. Then the third thing, algorithmic thinking. Algorithmic thinking is technically called Sutra Prakriya and Alaukika Prakriya. Rama plus iti sthite or Bhu plus ti iti sthite. Whatever things happen, that is dictated by the coding process, the sutra process, prakriyas, all that. But the output of that is Ramaha, because the speaker wanted to say Ramaha. Bhavati, that's what he wanted to say, not Bhuyat. Therefore, intention to the output expression is algorithmic thinking in between processor. So if we understand natural language or language processing, then that connects to the brain processing and mind processing, two things. Brain processing is neurological. Mind processing is the thought level. So what computer scientists, neuroscientists have excelled is getting at the neurological level, but they have no clarity on what is consciousness that drives the mind. This is where Shiksha Sutra comes. Atma buddhya samayukta manoyungte vivakshaya. If physicists and scientists have no clarity on what is manas, then we have to define manas for the machines. This is yantratam manushi bhasha. Okay, next. Four, data compression and encryption. So this is technically the process of the krut tadhita samasa of the alaukika prakriya. Okay, so if you understand natural language processing and then the alaukika prakriya, we will be able to do it. But for that, you have to have the clarity on the pratyayas that are given, and the pratyayas are voice based, not Roman alphabet English based. These are agglutinating. Prakriti Pratyaya is integrated to become a pada. They are not isolated as in many world languages, including some Indian languages. Then cognitive computing. Bhasha starts with vak, the vivaksha. Vivaksha is the cognitive part of that. And then the descriptive and the computation part takes over when vak becomes a vakya. This is why the total discipline is called Vako Vakyam. So we have lost this tradition. We have got to get back to this. And 14th century Acharya Madhva says, Vako Vakyam is the discipline needed to understand, decode Veda Artha. This is what it is. This is what it is. So we have got to get to Vako Vakyam for cognitive computing. Formal verification is Nyaya Shastra, filtered, and Nirukta, Prakaranasha. Do we know how to apply it? If we know what is the context, Prakarana, we will be able to apply it. Saindhava Manaya, to bring salt or the horse. Okay? Then machine learning and pattern recognition. If we don't understand our own language, it's like a reverse question. You give the 21 forms of Rama, Ramu, Ramaha to Rame, Ramayoho, Rameshu. 21 forms you give. And ask the machine to extract Rama out of these 21 or 21 million forms. It cannot. This is called the Jati Grahana. Shabda Jati Grahana, Pada Jati Grahana. So pattern recognition has to be coded. So how did Panini get Sarvadi Gana? That these are similar things. How did he get the Akriti Gana? How did he get the Upama? Upamitam Vyagradibi. So this is where we need to first get our native language modeling. We are just working segmentally
on the language. Next. Human-computer interaction. So this is their Astra Shastra Aushadha model. The speaker quotes the mind when it puts its imprint on the brain, and then the Manakaya Agnimahanti Tadaschalayati Marutam, that Pravaha takes place, the Vakya. So the human part is over. It is now ready for transmission. Now from that transmission to get back to the intention, Vivaksha. Vivakshada bhavanti, that is what we know. Vivakshada karakani bhavanti, we know. But how do we get the Vivaksha itself? This is where we have got to get the integration of the Nyaya Shastra and the Nirukti Shastra and the Mimamsa. We are not anywhere close to that. Okay. Then computational linguistics. Computational linguistics is... No, sir, one point missing, knowledge, representation and reasoning. Okay, knowledge, representation and reasoning is, if we know how to decline Rama Shabda fully, and it is all Akaranta Pullinga Shabdas, why is Nana Shabda Akaranta Napumsakalinga different? Okay, if Sarvanamas are in same Gana, why is some Shabdas like Eka are only in certain Vachanas, not in the rest of the Vachanas? Ji. So this is the knowledge representation, because in Sarvadigana, the listed 21, some are universal nouns, are the pronouns, what we call, okay? Then some are Sankhya Vachakas. Then are relative things, Yata Tata. So how did he put all these things under one group? That was a knowledge representation. Okay. Ji. Okay. I hope I have addressed why this is so critical to get into this particular level. जी वाकई आपने मेरे लिए ना बहुत सारे आयाम आज खोल दिए हैं। मैं दोबारा से इन सारे विषयों पे विचार करूंगा, दोबारा से सारी रिकॉर्डिंग को सुनूंगा और फिर दोबारा आपसे बात करूंगा। And Akshay Chaitanya wants something? जी, just want to thank you, giving thanks to you, because you have clarified the doubt that only cryptogram is not enough and that Lipi methods and things are there. So Akshay is trying to take some steps on that behalf, and I've worked on trying to decipher the Indus script. Thank you very much. I would like to share later on with you my conclusions. Thank you, sir. You have my email. Please feel free to share that. And my input for Neeraj Sharmaji is, even Anand Prakashji, if we go back to 1960s, when Remington typewriter was transformed, IBM took the patent for the Remington layout keyboard and made a digital keyboard, PCXT, that kind of a thing. Okay, the first use of it was in the computation. Scientific people used it. Then they came to the data processing, and then it got extended. And over a period of time, it got extended to non-Roman script or non-English European languages and other things. So this is just 40 to 60 years of work. Now, if we start with our native keyboard, which includes the human voice model, including the Roman script, the quality and everything else, we should be able to take over the world in a much bigger way for the AI and the robotics interfaces. So the courses could be at the BA level, understanding the character set, not just typing, native keyboard to type the native language for the digital devices. This is where the training will go a long way. जी आनंद जी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। देवदत्त जी again. नहीं सर, I think आपने जैसे आपने कहा बहुत सारे आयाम खोल दिए हैं, कहाँ से इसको पकड़ सकते हैं और सभी जगह स्कोप है। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि अराउंड 85 में IIT कानपुर में वो कीबोर्ड बनाया था देवनागरी लिपि का,
और वो तो सिर्फ जो है उसको सिर्फ कोड लेवल पे कन्वर्जन था कि भाई ऊपर से साफा गाला दिखेगा और अंदर जाकर के तो वो रोमन कन्वर्ट हो जाना था। इंस्क्रिप्ट का हाँ, इंस्क्रिप्ट का वो कीबोर्ड का एक प्रोजेक्ट चला था 85 में, मुझे वो याद आया। And we should have pursued that gist-call technology for a longer time, well, whatever historic reasons and commercial reasons. आई थिंक अभी टाइम काफी अच्छा है, आई थिंक वी विल टेक इट। ओके, जी देवदत्त जी बहुत संक्षेप में, और उसके बाद आज की इस संवाद को हम यहीं विश्राम देंगे। जी देवदत्त जी। हाँ जी सर। मैंने क्वेश्चन भी टाइप किया था कि मतलब हम साउंड बेस सेंसर डेवलप करें और वो तक डायरेक्टली वो एनस्क्रिप्ट करे, वहाँ पे डिकोड करे, उसको सेंस करे। प्रॉब्लम क्या है आजकल की 20 से ज़्यादा लैंग्वेज आ चुकी है और हाई लेवल, मीडियम लेवल और जाना तो सबने बाइनरी में ही है, तो हम क्यों नहीं उसको डायरेक्ट साउंड वेव से वहाँ सेंस करें। तो ये संस्कृत से ही होगा, क्योंकि जो हमारे संस्कृत वर्ड है वो वेव से रिकॉग्नाइज हो गए और वो फिर उसके लिए हम सेंसर, तो इसमें हम फ्यूचर उसमें देख सकते हैं कि ऐसा सेंसर हम बना सके जो डायरेक्टली साउंड को सेंस करे हो। फिर हमारी बीच वाली जो ये कंपाइलेशन होती है हायर लेवल से, लोअर से, मीडियम से, और ये इतने जो लैंग्वेज के जो झंझट होते हैं इससे बचेंगे, तो ये हम फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। मेरा यही वो था, क्वेरी थी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। To respond to Devdutt ji very quickly, sir, voice coding by programming tools like Eclipse is not going to take us very far. The tools provided by Meta for the voice analysis are also not going to take us too far. We need to develop based upon our own voice coding. Panini, Varnakshar, Sanket Sarini, we have got to develop and build it. So this is what Alexis, the Microsoft researcher, he said, if you take a mirror and break it and reassemble it exactly with all the pieces, you will not get the image. You can see your own image in a broken mirror. Like that, nature has some way of doing. That is a difference between analog and digital. So we can talk about that separately. जी ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो आज के इस संवादशाला को आज हम यहीं विश्राम देंगे, और जितनी संभावनाएं और जितने आयाम हमारे सामने आज उभर कर आए हैं कंप्यूटेशनल संस्कृत को लेकर के, वो अद्भुत है। कम से कम मेरे लिए तो ये एक अपने आप में, मेरे लिए तो बहुत सारे द्वार जो हैं खुल गए हैं, और बहुत, मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस मामले में, इस सारे विषय में बहुत जड़ता में था। मुझे सूझ नहीं रहा था कि और नए रास्ते कौन से हो सकते हैं, मार्ग कौन से हो सकते हैं। तो आज मेरे लिए बहुत सारे मार्ग खुल गए हैं, और निश्चित रूप से इन सारे विषयों को समय समय पर और हम विकसित भी करेंगे, इन पे चर्चा भी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि शास्त्री जी, आदरणीय शास्त्री जी जो है, वो हमारा भविष्य में भी मार्ग निर्देशन करें। ये उनका पहला लेक्चर था, लेकिन मैं चाहूँगा, मेरा ये उनसे विनम्र आग्रह रहेगा कि एक लेक्चर जो और है, इस सारे विषय को और विस्तार पूर्वक लें। और इसके साथ ही मेरा एक आग्रह रहेगा आनंद प्रकाश जी से और चित्तरंजन जी से कि इस विषय के ऊपर एक कार्यशाला जो है, वर्कशॉप के रूप में इसको हम आप देखिए कि कैसे संभावना हो सकती है। क्योंकि ये विषय सिर्फ लेक्चर के नहीं है कि एक्चुअली ऑन हैंड जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करवाएँगे, तो ये बात नहीं बन पाएगी। तो अगर आप किसी एकेडमी के साथ मिलके, यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के इस सारे विषय के ऊपर वर्कशॉप लगाएँगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये मेरा आपसे ज़रूर निवेदन रहेगा। उसके साथ आप संस्कृत अकेडमी की सहायता लें, या आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की लें, वो लोग इनिशिएटिव लेने वाले हैं, नहीं तो जेएनयू को भी आप लोग टाई अप कर सकते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका, सभी श्रोताओं का जो शेष रह गए हैं उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने धैर्यपूर्वक इन सब विषयों को सुना, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल विषय था और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता थी।
क्योंकि हम लोगों की जिस तरह की कंडीशनिंग है, जिस तरह की वृत्ति बनी हुई है सोचने, समझने और रिस्पॉन्ड करने की, ये उससे बहुत भिन्न विषय हैं। तो लेकिन ये आवश्यक है कि संस्कृत को अगर हम भविष्य में सुस्थापित करना चाहते हैं, संस्कृत शास्त्रों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और सारे डिस्कोर्स को, एकेडमिक डिस्कोर्स को नए सिरे से हम परिभाषित करना चाहते हैं, तो हमें अपने सोचने समझने का तरीका बदलना होगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ जो भी भारतीय नॉलेज सिस्टम के ऊपर लेक्चर्स करते हैं, उनको मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमें ये निश्चित करना होगा पढ़ाना क्या है और पढ़ाना कैसे है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी विषय है। तो इस 2 बातों को ध्यान में रख कर के हम चाहेंगे और अपेक्षा ही रखूँगा मैं आनंद जी से और मैडम स्वीति जी से कि इसका कोर्स डिज़ाइन भी करने का एक कार्यशाला लगाएँ। क्योंकि अब ये लेक्चर्स का समय कम है, कार्यशालाओं का अधिक है। तो मुझे लगता है आनंद जी एक अंतिम बात शायद कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम इस नहीं सर, बस आपको मैं आई वाज जस्ट अफर्मिंग व्हाट यू सेड। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे पता नहीं मैं कैसे धन्यवाद आप सबका करूँ कि मेरे इस आग्रह को आप लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवती की कृपा ही है कि शास्त्री जी के साथ संपर्क हो गया, हम कैसे आनंद जी के धन्यवाद करें साथ। आपका? हम कैसे धन्यवाद करें आपका? नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं, बातों से मिला देते हो आप। नहीं, सताम नहीं, ये संग्रह कथमय पुण्येन भवति। कोई पुण्योदय हुआ है हमारा आज? नहीं, बिल्कुल। नहीं, नहीं, वाक़ई आप धन्यवाद, सबका धन्यवाद। स्नेह और सर्वे प्रेम जो भवन्तु है सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे निरामय। भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको वंदन, अभिनंदन। चलिए, चलिए डायरेक्टर साहब ने सबका धन्यवाद ज्ञापन भी कर दिया है और शुभकामना भी कर दी है। तो आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं और सैटरडे को हम मिलेंगे। वो कश्मीर के लिए सुरक्षित है वो दिन। कश्मीर के विषयों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद अगले विषयों को हम फिर लेंगे। कुछ विज्ञान के हैं, कुछ सोशल साइंसेज़ के हैं। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। थैंक यू।